All right. Hi everyone. Good afternoon. फटाफट से confirm कर दो before we begin. This is your final class for the June cycle. So before we can begin, फटाफट से confirm करो. Can you people hear me clearly? हाँ जी. Am I clearly audible? I need a confirmation before we can begin. Final mock test है. जल्दी जल्दी start कर लेते हैं. We have a lot many questions and we're going to begin with reading comprehension questions. चलो आ जाओ then. Hi everyone, good afternoon, good afternoon, good afternoon. I'm pretty sure everybody is a bit nervous, everybody is a bit anxious, everybody is also a bit scared about tomorrow's exam. जो typical exam blues हैं वो हो रहे होंगे, but no worries, हम tension नहीं लेंगे. Last day है, final day है, एक final mock test attempt करने वाले हैं, and once we attempt this, then we are going to relax, we are going to let ourselves breathe. एक calm state of mind के साथ we are going to enter the examination center. ठीक है? Are we all set? Good evening, good evening. ठीक है. Okay, cool. Good afternoon, good afternoon. I'm very well. Thank you for asking. ठीक है, चलो start करें. आयुषी, good afternoon बच्चे. अच्छा, start करें, हो गया. But before we begin, what does this say? मुझे बताओ, what does this say? What does this imply? इसका मतलब क्या है? It simply says that the examination is going to be 3 hours, but you've studied for 6 long months. In fact, some of you have studied for more than 6 months. Of course, agar aap repeated hain, you must have studied for 1 year or more than 1 year. Which means what? Which means when you enter the examination hall, you need to be confident enough that I have studied enough for this 3-hour exam, and there is no way I will not be able to attempt every single question, and there is no way I will not be able to clear my NET or JRF. Okay? Let's manifest, right? And with that positive attitude, we'll enter the examination center. Okay? Yes, yes, yes. Good afternoon, Debussy. Good afternoon, Mukesh. ठीक है. देखो स्टार्टिंग करने वाले हैं हम एक पैसेज वाले क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज एज यू नो पेपर 2 में बच्चे 2 पैसेजेस आते हैं. देयर इज अ वर्स पैसेज, देयर इज अ प्रोज पैसेज. तो आई थॉट कि फाइनल मॉक टेस्ट है तो पहले वर्स पैसेज से स्टार्ट करेंगे. एट द एंड आपके पास एक प्रोज पैसेज आएगा, बीच में आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे. सो दैट्स द फ्लो ऑफ टुडेज क्लास. ठीक है, आर वी ऑल सेट? हर एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट नेट पैटर्न वाला है, विच मीन्स हमारे पास क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम रीजन असर्शन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस होंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस तो होंगे ही कुछ. डन? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ठीक है, चलो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर रेडी, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन एक फटाफट से कंफर्मेशन दे दो, सबने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया और आर वी स्टिल वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट? अभी भी लास्ट मोमेंट वाला थ्रिल हमें चाहिए. आर वी स्टिल वेटिंग फॉर दैट, या फिर अभी एडमिट कार्ड सबने प्रिंट कर लिया है? क्विक कंफर्मेशन बिफोर वी कैन गेट स्टार्टेड. हाँ जी, रिंकी गुड आफ्टरनून. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. दिस इज योर फाइनल मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जून साइकिल 2025. वी हैव अ सेट ऑफ 100 questions and 5 questions are from a prose passage, 5 questions are from a verse passage, and remaining 90 questions are from miscellaneous patterns including reason assertion, statement 1, statement 2, chronology, match the following and some such patterns. चलिए लेट्स बिगिन. अच्छा, फाइनली स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश, बिकॉज टुमारो वी हैव आवर एग्जाम. फाइनल एग्जाम जब कंडक्ट हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम यू विल हैव एन एग्जाम एनालिसिस. हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे. कंप्लीट आंसर की डिस्कशन होगी और उस सब के लिए आपके पास जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको कहाँ मिलेंगी? ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो डू मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले अगर आपको जितने भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हैं वो चाहिए. ठीक है, कट ऑफ भी मैं आपको यहीं पर बताने वाली हूँ. ओके, दिस इज योर पैसेज. सबसे पहले आपके पास एक पोएम है. द पोएम इज कॉल्ड द लैम्प लाइटर्स आर. फटाफट से पोएम को पढ़ लो एंड देन आई विल बिगिन टू शो यू क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोएम, लैम्प लाइटर्स आर. चलो. Palakshi says, ma'am, but I'll be leaving my phone at home. How will I connect with you? Palakshi, बच्चे जल्दी जल्दी घर से वापस एग्जामिनेशन हॉल से वापस आना, and that's the only way you can connect with me. Otherwise कैसे ही करोगे, है ना? Unless you have somebody who will accompany you, that's another thing. अगर कोई नहीं है, अगर अकेले जा रहे हो, no worries. Come back home and then you can connect with me. ठीक है, टेलीग्राम पर. Cool. चलो start कर दो. First question for you people is लैम्प. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो तब देखेंगे, पहले लैम्प लाइटर्स डे आंसर तो करो. ठीक है, तो लैम्प लाइटर्स आर इज अ पोएम व्हिच सेज, एट द डस्क द लैम्प लाइटर गोज डाउन आवर स्ट्रीट.
लैम्प लाइटर इज बेसिकली अ पर्सन हु लाइट्स द लैम्प्स. ठीक है, किसी इंसान का जॉब क्या है? दे हैव टू लाइट लैम्प्स एवरी सिंगल डे. So at the task, the lamplighter goes down a street with one long pole to wake the sleeping flame. Now there's a sleeping flame. The lamplighter lights the flame. Lamplighter क्या करता है बच्चे? लैम्प को कैसे लाइट करता है? मैनुअली लाइट करता है. ठीक है, the manual act of lighting the lamp. जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं आपके, अब तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं, बट बिफोर दैट जो लैम्प्स हुआ करते थे, दे हैड टू बी लिट बाय हैंड, राइट? With one long pole to wake the sleeping flame, each lamp in turn receives its small brief heat, a row of stars that know the lamplighter's name. See, a lamplighter has been doing this task for so long that all the flames also know the lamplighter's name. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. I watched him once, a boy with no great haste. Now the lamplighter is a young boy, and he does not rush to light all the lamps. He goes to light the lamps as an everyday activity, who touched each glass as if it were a friend and thought how little light is ever wasted if someone walks the whole street to its end. Now towns have learned to light themselves as once. Now the speaker says कि अब क्या हो गया है? We live in the advanced age of electricity, जहाँ पर हर एक टाउन अपनी लाइट जो लैम्प्स हैं उसको खुद लाइट कर सकता है. We do not anymore need a specific lamp lighter to light the lamps manually, right? So now towns have learned to light themselves at once. A single switch undoes the lamplighter's art. The street is bright, but something in the bronze of that slow walking live in my heart. And what is tended lamp by hand outlasts the light that floods a wider land. He says something that is done by hand, manually जो किया जाता है, somehow उसका जो effect है will outlast or will last longer than something जो कि mechanically या electronically किया जाता है. ठीक है, have we read this? Give me a quick tick अगर ये read कर लिया, then we look at the questions. चलो, very quickly give me a quick tick in the comment section and then we'll move on to the questions. Question number 1 for you people is, the central contrast developed across the poem is between what and what? Central contrast किस चीज के बीच में है in this poem? Rural and urban settings, childhood memory and old age, individually tended hand lit lamps and instantaneous impersonal mass lighting, or daylight versus darkness? Question number 1, please start answering. ठीक है, रीड कर लिया तो क्वेश्चन आंसर करते हैं. इस फॉर्म में जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है किस किस चीज के बीच में है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट है किस चीज के बीच में है? स्पीकर वेरी एविडेंटली सेज इन द फर्स्ट 2 स्टैंजर्स. कितने स्टैंजर्स हैं बच्चे? स्टैंजर 1, स्टैंजर 2, स्टैंजर 3. डू वी हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैंजर्स? नो. Stanza 1 has 4 lines, stanza 2 has 4 lines. However, stanza 3 has 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, actually stanza 3 के भी 4 ही lines हैं. एंड स्टैंजा जो लास्ट वाला है वो एक सेपरेट कपलेट है. ठीक है, वो एक सेपरेट कपलेट है. तो बाय दैट लॉजिक ये क्या बन गया? क्या फॉर्म है इस पोम की? इज इट एन ओड? इज इट एन एलिजी? इज इट अ सोनेट? क्या फॉर्म हो जाएगी? अगेन वी हैव गॉट 1 क्वार्टरेन, 2 क्वार्टरेन्स, 3 क्वार्टरेन्स एंड फॉलोड बाय अ कपलेट. तो जब 3 क्वार्टरेन्स होते हैं किसी भी पोम में फॉलोड बाय अ कपलेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली एन इंग्लिश सोनेट. ठीक है, तो इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट किसमें है? बिटवीन द एक्ट द एक्ट ऑफ मास लाइटिंग, जब इलेक्ट्रॉनिकली मैनुअली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो ये कॉन्ट्रास्ट आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, द पोम्स राइम स्कीम इन ईच क्वार्टरेन फॉलोज विच पैटर्न? ईच क्वार्टरेन फॉलोज व्हाट राइम स्कीम? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वेरीफाई भी कर सकते हो आप कि ये एक शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट है या नहीं है बाय लुकिंग एट द राइम स्कीम. क्या है राइम स्कीम? स्ट्रीट, हीट, हेस्ट, वेस्ट, वंस, ब्रॉन्ज, हार्ट, आर्ट, एंड, फ्रेंड, नेम, फ्लेम. तो व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? ए बी बी ए बी ए बी, ए बी बी, या फिर फ्री वर्स है एंड देयर इज नो फिक्स राइम स्कीम एट ऑल. ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी, A, B, A, B. So that's your correct answer. Street, heat, A, A. Flame, name, B, B. A, B, A, B is your correct answer. Next question. The phrase "a row of stars that know the lamplighter's name" exemplifies what literary device? ये जो phrase था ना, यहाँ पर है.
A row of stars that know the lamplighter's name. इस phrase में कौन सी poetic device या literary device का use है? Personification, simile, onomatopoeia और apostrophe और apostrophe. Okay, चलो. A row of stars that know the lamplighter's name. Now, stars are inanimate objects. Stars are non-living things. But if they can know something, who can know something? Humans can know something. So, stars getting to know something. Who said simile? Simile क्यों हो जाएगा student? Simile क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ पर stars की और lamp light की comparison नहीं है. This is not simile. No. Rather, what's happening is a row of stars who happen to know the name of the one who lights the lamps. And knowing is an act which is done by humans. We are the ones who know or do not know. So this is personification. This is an example of personification. Next question. In the final stanza, the speaker suggests that what is tended lamp by hand ultimately does what? Last line में क्या था? For what is tended, what is taken care of, what is done lamp by lamp, एक एक करके जो चीज की जाती है, मैनुअली की जाती है, by hand की जाती है, somehow that thing lasts longer than something जो mechanically की जाती है. ठीक है? From where I see this as a very anti-capitalist form. नहीं? अगर हम इस पे मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई करें, then we can see that this is a very anti-capitalist form. Capitalism क्या होता है बच्चे? Capitalism says, well, everything can be done machine के through produce हो सकता है. Everything can be manufactured using machines, mass production, right? तो यहाँ पर mass lighting can be compared to mass production in the factories. लेकिन जब mass production होती है किसी भी चीज की, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट लूजेस द एसेंस, इट लूजेस द ऑरा, इट लूजेस द ऑथेंटिक एसेंस ऑफ इटसेल्फ, है ना? तो मैनुअली अगर आप किसी चीज को बनाते हो, इफ यू पेंट अ पेंटिंग योरसेल्फ, it has something of your own to it. There's a subjectivity, there's an experience attached to it. But if you buy a painting जो कि हर इंसान खरीद रहा है, you're basically buying something जो कि machine made है. So again, that idea can be compared here. And idea क्या है? Outlasts the more extensive but impersonal light of the mass illumination. That's your correct answer. ठीक है? Cool. चलो. These were 4 questions. Last question on this verse passage is the poem's tone towards a modern automated lighting. A single switch can be best described as what? जो speaker की tone है towards this new idea of automated lighting, जिसमें city की जितनी भी lights हैं वो खुद ही on हो जाती हैं, खुद ही off हो जाती हैं, and you do not need to manually do it. What is that tone? What is that tone? Is it elegiac tone? Is he mourning the fact कि पहले manually चीजें की जाती थी, but today in today's world everything is done in a very automated mechanical form? Or is he entirely indifferent? He does not care? Or is he wholly celebrating and is he very enthusiastic about the fact कि अभी lights खुद ही on हो जाती हैं lamps को जलाने के लिए? We do not need a separate person. Or is he angry and is he condemning it? Definitely he's not angry, but there's also a sense of loss that we sense in his voice. Okay, so he's basically mourning, he's lamenting the fact that once we had a world where things were done manually, however today's world is completely automated, right? That's your correct answer. ठीक है? Done. अब ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रोज, ऐसा वर्स पैसेज अगर एग्जाम में आ जाता है, ऐसी पोम आ जाती है एग्जाम में, विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चंस? ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये बच्चे आपके नियरली फ्री के क्वेश्चंस होते हैं. यू बीन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिंस स्कूल टाइम्स. स्कूल से आता है, 4th 5th स्टैंडर्ड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश के एग्जाम में आती थी. ठीक है? तो इनको सॉल्व करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. एज लॉन्ग एज आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन बी केयरफुल, तो आपके 5 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे. 5 questions from prose and 5 questions from verse. So I don't want you people to lose these 10 questions. Out of 100 ये 20 questions तो हमारे करेक्ट होने ही चाहिए. ठीक है? बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्टैंजा आ जाएगा जो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, अदरवाइज ऐसे ही स्टैंजास आते हैं ना. अब जो प्रोज पैसेज है वो हम क्लास के एंड में सॉल्व करेंगे. अब बीच में और क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो वील फॉलो विद दैट. नाउ बिफोर वी बिगिन, इंपॉर्टेंट एक और अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ. अच्छा, those of you who are appearing for the June cycle,
यानी जिनका एग्जाम कल है, जून 2026 में जिनका एग्जाम है, एंड दोज ऑफ यू हु आर एक्चुअली एनरोल्ड इन माय कोर्स राइट नाउ, ठीक है। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो, यू आर एंटाइटल्ड टू अ 100% refund of your entire subscription. कैसे मिलेगा? यू नीड टू मेक श्योर कि आप JRF क्वालिफाई करें, एंड आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड इस मेल आईडी पर शेयर करना है। व्हाट इज द मेल आईडी? द मेल आईडी इज help@unacademy.com. प्लीज नोट, ठीक है। जितनी भी आपने फी पे की होगी अपनी सब्सक्रिप्शन की, यू कैन गेट ऑल ऑफ इट बैक, राइट? दिस इज फॉर जून स्टूडेंट्स। Likewise, anybody who's preparing for the December 2026 एग्जाम ऑफ UGC नेट, या फिर अगर कोई 2027 जून साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और अगर आप अभी UGC नेट कोर्स में एनरोल करते हो और उसके बाद यू मैनेज टू क्वालिफाई योर JRF, तो जितनी भी फी आप पे करोगे, योर एंटायर सब्सक्रिप्शन विल बी रिफंडेड टू यू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। डन? समझ आ गया क्या कंडीशंस हैं? द ओनली कंडीशन इज आपको JRF क्लियर करना है। अच्छा, अगर दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं वो समहाउ JRF क्लियर नहीं कर पाते, तब क्या होगा? क्या उनके लिए कुछ नहीं है बच्चे? कुछ ऐसा नहीं है। इफ यू डू नॉट क्लियर योर JRF, तो आपको क्या मिलेगा? आपको अपने कोर्स में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने दिसंबर 2026 का कोर्स लिया होगा, तो आपको वो कोर्स एक्चुअली जून 2027 तक का मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपके लिए बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर क्लियर कर लेते हो, सारी फी रिफंड हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं करते हो, तो 6 मंथ्स का आपको कंप्लीट एक्सटेंशन कोर्स का मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑफर है। इफ यू वांट टू अवेल इट, आपको जो कोड यूज करना है जिससे आपको इसके बेनिफिट्स अवेल करने हैं इज AYESHA आयशा JRF। तो जो करंटली स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं कोर्स में, एंड इफ यू clarify your JRF, तो आपको क्या करना है? You need to mail your admit cards to this email ID, ठीक है। डन? डन? कैसे करोगे इस पूरे के पूरे ऑफर का यूज? एक बार प्लीज ध्यान से देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू क्लियर JRF in your June 2026 cycle, December 2026 cycle or June 2027 cycle, you will get, only if you clear JRF, not net alone, ठीक है, you get 100% subscription of your fee refunded. एंड इफ यू डू नॉट मैनेज टू क्लियर, तो आपके लिए कोई लॉस की बात नहीं है। अगर आपने दिसंबर वाले एग्जाम में एनरोल किया है, तो आपको प्लस 6 मंथ्स का कोर्स फ्री मिलेगा, यानी दिसंबर वाले स्टूडेंट को जून नेक्स्ट ईयर तक का कोर्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अपना रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने अपना एडमिट कार्ड सेंड कर दिया है ऑन दिस ईमेल आईडी। ये आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। कोड जो आपको यूज करना है इसके बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए इज AYESHA आयशा JRF, ठीक है। और ये बेनिफिट कब तक ही वैलिड रहेगा? अगर आप 27 जून से पहले एनरोल करते हो। हाउ विल यू एनरोल? जो आपकी करंट यूट्यूब क्लास चल रही है, या दिस इज योर क्लास, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, इफ यू फाइंड इट यूजफुल। और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे आपके पास जो अश्योर ऑफर है, ठीक है, इट्स एन अश्योरेंस, दिस इज एन अनअकैडमी अश्योरेंस, कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, वील गिव यू मनी बैक। इफ यू डू नॉट क्लियर योर एग्जाम, तो भी कोई लॉस की बात नहीं है, तो वील एक्सटेंड योर कोर्स वैलिडिटी। आपको क्या करना है? यहाँ पर जाकर, ये देखो, यहाँ पर 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के कोर्स के 2 ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर रेफरल कोड की जगह क्या रेफरल कोड अप्लाई करना है? द रेफरल कोड दैट यू नीड टू अप्लाई इज AYESHA आयशा JRF। वंस यू अप्लाई इट, आपके जो कोर्स के प्राइसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस आपको क्या मिल जाएगा? अश्योर के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफर। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट्स को अवेल भी करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को रिफंड भी मिलता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, तो पूछ लो। तो या दिस इज दी UGC नेट अश्योर ऑफर, एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं आप अवेल कर पाएंगे ओनली बिफोर 27 जून। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। The code that you've got to use is Ayesha JRF. Next question for you people is, which of the following poems by William Butler Yeats employs the gyres as a symbolic structure for historical cyclicity? विलियम बटलर येट्स का जो जायर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो इनकी खुद की कौन सी पोम में एविडेंट है? दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो क्विकली। जायर्स, the idea that time
रिवॉल्व्स, जैसे कि स्टेयरकेस होती है, वो वाइंडिंग वाली स्टेयरकेस देखी है? किस किस ने वो स्टेयरकेस देखी है? पहले आर्किटेक्चर में हुआ करती थी, अब तो नहीं होती है, ठीक है। कुछ सिटीज में अभी भी जो फायर एस्केप्स वाली जो स्टेयरकेस होती है वो ऐसे होती है। सो दैट स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर, राइट, दैट वाइंडिंग स्ट्रक्चर, दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको कहा था जायर्स, ठीक है। तो ये जो जायर्स का आइडिया है विलियम बटलर येट्स का, कौन सी अपनी खुद की पोएम में ये एविडेंट है, इन द पोएम कॉल्ड द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में ये एविडेंट है, ठीक है। चलो, द सेकंड कमिंग opens with the image of a falcon in a widening gyre, ठीक है, and the falconer can no longer call the falcon back, right? The falcon can no longer hear the falconer. Remember those lines? तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस is structurally indebted to which native English dramatic tradition? This is a slightly टेढ़ा question, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा before you go for the answer. Okay. Please be careful with this question. This is a slightly टेढ़ा question. I'm saying this already. चलो बताओ। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस कौन से नेटिव इंग्लिश प्ले राइटिंग ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है या उसको इंडेटेड है? इट इज नॉट सेनेकन ट्रेजेडी। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से मैम हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्यों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे? सेनेकन ट्रेजेडी बच्चे इंग्लिश ट्रेडिशन है, वो सेनेका एन इंग्लिश प्ले राइट। हाँ, सेनेका वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, ऐसा था। क्वेश्चन तो मैम हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले भी वी आर गोइंग टू एंड अप डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। सेनेकन ट्रेजेडी इंग्लिश कैसे हो गई? सेनेकन मॉडल को इंग्लिश ट्रेजेडीज में यूज किया गया था, लेकिन सेनेका वाज नॉट एन इंग्लिश प्ले राइट, तो बाय दैट लॉजिक आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? डॉक्टर फॉस्टर्स मास्क भी नहीं है। डॉक्टर फॉस्टर्स डेफिनेटली एक रेस्टोरेशन एज कॉमेडी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमेडी भी नहीं है, सेकेंडली इट डज नॉट बिलोंग टू रेस्टोरेशन एज, इट बिलोंग्स टू योर एलिजाबेथन एज। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? जो आपके मोरालिटी प्लेस हुआ करते थे। अब आप कहोगे मैम मोरालिटी प्लेस कैसे? रिमेंबर, मोरालिटी प्लेस में जितने भी वर्च्यूज एंड वाइसेस थी, स्पेशली जितनी भी रिलीजियस वर्च्यूज एंड वाइसेस थी, फॉर एग्जाम्पल सिन, है ना, तो ऐसे वर्च्यूज एंड वाइसेस को पर्सोनिफाई करके दिखाया जाता था। लाइकवाइज डॉक्टर फॉस्टस में क्या होता है? डॉक्टर फॉस्टस में बच्चे ये जो आइडियाज हैं, सिन का आइडिया, ठीक है, ये सारे के सारे आइडियाज हैं। सो समहाउ डॉक्टर फॉस्टस एक्चुअली ड्रॉज अपॉन और इज इंडेटेड टू द मोरालिटी प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस फॉलोज द मोरालिटी प्ले ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल एवरी मैन, स्ट्रक्चर्ड अराउंड द सोल्स टेम्पटेशन, द सोल्स फॉल एंड द सोल्स डैमेनेशन with good and evil angels as allegorical figures. क्या होता है? गुडनेस को पर्सोनिफाई किया जाता है इन अ मोरालिटी प्ले, इविल को पर्सोनिफाई किया जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी आपके पास वही होता है, ठीक है। इज दैट जस्टिफाइड? नाउ क्वेश्चन डिफरेंट था, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। एनीबडी हु इज नॉट कन्विंस्ड सॉरी so sorry, anybody who is not convinced, anyone who thinks कि नहीं नहीं सेनेकन ट्रेजेडी ही आंसर होना चाहिए, ध्यान से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में एक कीवर्ड था विच इज इंग्लिश, ठीक है। अगर कीवर्ड इंग्लिश है और अगर ये मिस कर दिया है तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज Ben Jonson's Volpini, the title character Volpini name is symbolically derived from the Italian word. Volpini is the Italian word for what animal? Even if आपको Italian word नहीं पता, लेकिन आपको इस पूरे प्ले का नाम पता है, तो Volpini और the dash, तो भी आप क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। दिस इज वॉल्पिनी बाय बेन जॉनसन, वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। रिसेंटली ये प्ले यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आया था। ओके, रत्ना बच्चे यही तो ट्रिक है। क्वेश्चन रीडिंग अपने आप में आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, ठीक है। सिर्फ आंसर कर पाना विल नॉट डिसाइड कि आप नेट क्लियर करते हो या नहीं करते हो। कितना आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड कर पाते हो। आर यू इन अ रश्ड स्टेट ऑफ माइंड? आई एम अगेन सेइंग दिस बच्चे, अगर आप रश्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है, बहुत ही एंग्शियस हो, यू विल एंड अप मिसिंग द कीवर्ड्स। आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मिस कर दोगे एंड देन सब खराब हो जाएगा। विच इज वाई आज शाम को 7 PM हमारा एक स्पेशल क्लास है विच इज अ फ्री क्लास ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जिसमें मैं जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आई एम गोना टेल यू कि आपको कैसे कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना है व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्पनी और द फॉक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following best describes the dramatic technique of anagnorisis as used in classical and Renaissance tragedy? As used in classical and Renaissance tragedy. Okay, चलो बता दो. एनेग्नोरिसिस, पेरिपेटाया दोनों ही एरिस्टोटेलियन टर्म्स हैं, दोनों ही पोएटिक्स के टर्म्स हैं. तो एनेग्नोरिसिस क्या होता है? एनेग्नोरिसिस इज दैट मोमेंट इन अ प्ले व्हेन एनी कैरेक्टर actually comes to recognize or discover something. ठीक है? The moment of recognition or discovery is called anagnorisis. For example, Oedipus Rex may, when Oedipus realizes that the woman he's been married to is his own mother Jocasta, and the man that he killed was actually his own father, right? तो जब ये realization set in होती है, that is an anagnorisis. वो एक turning point होता है. The protagonist's recognition or discovery of the identity or the situation is called anagnorisis. ठीक है? Done. पेरिपेटाया क्या होता है बच्चे? इट इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पेरिपेटाया. दिस इज एग्नोरिसिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज Samuel Beckett's Waiting for Godot is most closely associated with which theatrical movement? Pretty easy question. ये question आपका post war यानी post 1945 playwrights या drama से कर दो. Expressionism, kitchen sink realism, theater of the absurd or epic theater or epic theater. Waiting for Godot by Samuel Beckett is actually an absurdist play. In fact, classic example, best example, prototype of absurdist drama, जो best example known है हमारे लिए English language में, that is Waiting for Godot. Waiting for Godot has every single feature जो एक absurdist drama में होता है. List the features of an absurdist drama. Come on, very very quickly. List the features of an absurdist drama. ठीक है. अगर एक absurd play है आपके पास, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं? और दी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. सबसे पहले बच्चे एब्सर्डिस्ट ड्रामा में लिटिल टू नो प्लॉट होगा. लिटिल टू नो प्लॉट. ठीक है, प्लॉट बहुत ही कम होता है. फॉर एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गोडो में हम क्या कहते हैं? इट्स अ प्ले इन 2 acts. हम क्या कहते हैं? नथिंग हैपेंस ट्वाइस. क्योंकि दोनों ही एक्ट्स में मेजरली कोई एक्शन प्रोग्रेशन नहीं होता है. सो नथिंग हैपेंस ट्वाइस, राइट? नथिंग हैपेंस ट्वाइस. ओके, कोई मेजर प्लॉट लाइन नहीं हो. यस. दूसरा है बेयर मिनिमम यूज ऑफ डायलॉग. बेयर मिनिमम यूज ऑफ डायलॉग. तो डायलॉग क्या होता है बच्चे? बहुत ही कम यूज होता है. कैरेक्टर्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा आइडियाज का, वो बेयर मिनिमम होगा. कम से कम शब्द होंगे. एंड यूज ऑफ साइलेंसेस एंड पॉजेस. बहुत सारा साइलेंस एंड पॉजेस होंगे जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के बीच में आएंगे. ठीक है. थर्ड थिंग इज इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पर बहुत ही मेजर स्टेज डायरेक्शंस भी नहीं आएंगी. ठीक है, सेटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कोई मेजर डायरेक्शंस भी नहीं होंगी. तो इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, कम से कम लैंग्वेज का यूज भी होगा यहाँ पर. अब ये तो स्टाइलाइजेशन के बारे में हो गया, राइटिंग स्टाइल की बात में. ठीक है. ऑल्सो द प्लॉट इज रिपेटेटिव एंड साइक्लिकल. साइक्लिकल या फिर रिपेटेटिव होगा आपका प्लॉट. घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है. The plot moves like this, it does not move like this. Done. प्रोग्रेशन नहीं होगा, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स नहीं होंगी एक्शन में. कैरेक्टर्स आपके पास बेयर मिनिमम होंगे. थीम क्या है? द थीम ऑफ एब्सर्डिटी. हाउ लाइफ इज एब्सर्ड, हाउ लाइफ इज मीनिंगलेस. ठीक है. द बिग क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस? तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इज समथिंग दैट एवरी सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम एन एब्सर्डिस्ट ड्रामा डील्स विद. Done. Yeah, so these are your correct, these are all your features of an absurdist drama. हर एक feature हमारे पास Waiting for Godot में present है. Waiting for Godot originally was not written in English. It was written in what language? Because Samuel Beckett was an Irish playwright. तो Waiting for Godot उन्होंने कौन सी language में लिखा था originally? He was an Irish playwright. Plus he was also the winner of Nobel Prize. है ना? तो ये जो प्ले है बच्चे, ओरिजिनली ये जो प्रीमियर हुआ था पहली बार 1953 में हुआ था. एंड देन 1955 में दोबारा हुआ. 1955 में इट वाज प्रीमियर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. कहाँ पर प्रीमियर हुआ? इन द सिटी ऑफ लंदन.
तो लंदन में पहली परफॉर्मेंस होती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउएवर ये पहले ही पेरिस में, फ्रांस में पब्लिश परफॉर्म हो चुका था इन फ्रेंच लैंग्वेज, एंड द फ्रेंच टाइटल ऑफ दिस प्ले इज कॉल्ड एन अटेंडेंट गोडो, एन अटेंडेंट गोडो। ठीक है, डन। अब याद रखोगे सारी डिटेल्स। हुआ द टू मेन कैरेक्टर्स, आपके पास दो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमिर। देयर आर टू मोर कैरेक्टर्स, एक तो एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमिर का डुओ है, बट देयर इज आल्सो अनदर डुओ हु कम एंड मीट एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमिर। कौन सा वो डुओ है? we've got Estragon, that is Gogo, and Vladimir, who is known as Didi. So Estragon का नाम क्या है? Shortened name is Gogo, and Vladimir's shortened name is Didi. Didi. And इन दोनों को मिलने के लिए कौन आता है? We have two more characters. Somebody please name them. Lucky and Pozo. Yes. So Lucky and Pozo की भी brief appearance होती है. These are the four major characters, but there's a fifth character as well. Who's the fifth character who makes an appearance in the play? Godo never makes an appearance in the play. Godo never shows up. ठीक है, they keep waiting and they keep waiting endlessly. लेकिन गोडो नेवर शोज अप। इनफैक्ट गोडो इंसान है, गॉड है, क्या है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इस पर तो काफी सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। बट अनदर कैरेक्टर हु शोज अप इन द प्ले कौन है? देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन ऑल। हु इज द फिफ्थ कैरेक्टर? कौन बताएगा? चलो चलो चलो, क्विकली क्विकली क्विकली। द बॉय, द मैसेंजर फ्रॉम गोडो। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर्स, बेयर मिनिमम डायलॉग का एक्सचेंज होता है। इतनी बार इनफैक्ट क्या होता है, एस्ट्रागॉन या फिर व्लादिमिर टेल ईच अदर लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग, एंड देन दे डू नॉट मूव। ठीक है, बहुत सारी जगह, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं व्हेन बोथ ऑफ देम डिसाइडेडली से यू नो व्हाट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग, लेट्स जस्ट गो, एंड देन दे डोंट मूव। ठीक है, जैसे आप कभी अपने फ्रेंड से कहते हो चलो चलो बाहर चलते हैं, उसके बाद वो भी नहीं उठता, आप भी नहीं उठते, दोनों बैठकर रील स्क्रॉल करते रहते हो, होता है, राइट? In that situation, you are what Estragon and Vladimir are going through. होता है ना? The inability to move, the purposelessness, ठीक है, right? The conflict between wanting to do something and not actually doing something. ठीक है? चलिए, next question is Harold Pinter's plays are characterized by comedy of menace. Pinter was awarded Nobel in 2005. Again, a question from post-war age, post-war drama. चलो, post-war age or post-war drama. Next question. Both A and R are true. Harold Pinter के plays को actually comedy of menace कहा जाता है. In fact, comedy of menace के जो best examples हैं वो Pinter की plays ही हैं. However, ये जो term है पहली बार किसने use किया था? Comedy of menace term किसने use किया था? इसकी term की coinage का credit हम किसको देंगे? कि वो जो रिव्यूअर वो प्ले को रिव्यू कर रहे थे, किसके प्ले को रिव्यू कर रहे थे? एंड उस प्ले का नाम क्या था जिस प्ले को वो रिव्यू कर रहे थे? बिकॉज जिस प्ले को वो रिव्यू कर रहे थे उसका सबटाइटल था अ कॉमेडी ऑफ मेनेस। तो द टर्म वाज एक्चुअली गिवन बाय, या बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 2005 में हैरोल्ड पिंटर विल गो ऑन टू विन द नोबेल प्राइज। ऑल्सो हैरोल्ड पिंटर के जो प्लेस हैं दे कैन बी बेस्ट कैरेक्टराइज एज कॉमेडी ऑफ मेनेस। मेनेसिंग क्या होता है? ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको डराए भी बट कॉमिक भी हो, कॉमेडिक भी हो, राइट? कभी कभी आपका क्या होता है, व्हेन योर लाइफ इज सच इन सच अ डिसएरे, when your life has just fallen apart and there's a sense of fear, something that terrorizes you, but it's also comedic. तो वो जो comedic terror होता है, fear होता है, वो जो mixture होता है of both these feelings, that is your menacing situations. तो ये term पहली बार use किया था Irving Waddell ने, and Irving Waddell was actually reviewing a play by David Campton. तो David Campton की play का नाम क्या था? Irving Waddell David Campton की play का review कर रहे थे, ठीक है, और डेविड कैम्पटन की प्ले के सबटाइटल में ही आ जाता है अ कॉमेडी ऑफ मेनेस. व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? मार्टिन एसलिन का टर्म था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, है ना? मार्टिन एसलिन का टर्म है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, क्वेश्चन अगर बन जाता है कल. और इरविंग वॉडल का टर्म है कॉमेडी ऑफ मेनेस. डेविड कैम्पटन का प्ले जिसको वो रिव्यू कर रहे थे, व्हेन ही केम अप विद दिस फ्रेज और दिस टर्म, द प्ले वाज कॉल्ड, किसी को नहीं पता है? सब भूल गए? सब भूल गए? कैम्पटन के प्ले का नाम स्टूडेंट्स, आई एम गोना नीड द नेम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, मेरे नोट्स में ये हमेशा लिखा होता है. सो द ल्यूनेटिक व्यू, वेरी गुड. हुएवर टोल्ड द करेक्ट आंसर, किसने बताया ये करेक्ट आंसर? हियाशी, वेरी गुड.
द ल्यूनेटिक व्यू, द ल्यूनेटिक व्यू का सब टाइटल था अ कॉमेडी ऑफ मेनेस, अ कॉमेडी ऑफ मेनेस। ठीक है, तो यहीं से ये सब टाइटल पिक कर लिया हमारे इरविंग वॉर्डल ने, एंड देन ही अप्लाइड दिस टर्म नॉट जस्ट टू द प्लेस ऑफ कैम्पटन बट ऑल्सो टू द प्लेस ऑफ हैरल्ड पिंटर। ये क्वेश्चन बन जाता है किसका टर्म है, कहाँ से आया, किसका प्ले रिव्यू कर रहे थे, ऑल दीज थिंग्स। गुड आफ्टरनून तुषार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज Osborne Look Back in Anger is considered the founding text of which dramatic movement? This is also a question from post-war drama or post-1945 drama. ये भी आपका पोस्ट 1945 ड्रामा या पोस्ट वॉर ड्रामा का क्वेश्चन है। रिमेंबर पोस्ट वॉर ड्रामा में हमने तीन मेजर प्ले राइट्स स्कूल्स ऑफ प्ले राइटिंग की डिस्कशन की थी। देयर वाज एब्सर्डिस्ट ड्रामा, देयर वाज कॉमेडी ऑफ मेनेस प्लेज एंड देयर वाज द थर्ड वन इज कौन सा हो जाएगा? इन योर फेस थिएटर वर्स्ट ड्रामा रिवाइवल। वर्स्ट ड्रामा की रिवाइवल एक्चुअली थॉमस टर्न एलियट ने की थी थ्रू प्लेज लाइक मर्डर इन द कैथीड्रल, Angry Young Men and Kitchen Sink Drama or Theatre of Cruelty. The answer has to be Angry Young Men or Kitchen Sink Drama. किचन सिंक ड्रामा जो टर्म है वो डिराइव करता है फ्रॉम द किचन सिंक मूवमेंट। किचन सिंक मूवमेंट एक मूवमेंट है जो पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? इन पेंटिंग्स। ठीक है, ये पहले पेंटिंग्स में स्टार्ट हुआ था एंड देन इट गॉट एक्सटेंडेड टू लिटरेचर। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड किचन सिंक? इट कुड हैव बीन कॉल्ड अ वॉश बेसिन ड्रामा, है ना? अगर हम ऑर्डिनरी चीज का नाम ही रख रहे हैं, दिस कुड हैव बीन नेम्ड अ वॉश बेसिन ड्रामा। नो, सो व्हाई इज इट कि इसका नाम किचन सिंक ड्रामा ही है? व्हाई पर्टिकुलरली किचन सिंक? यू गॉट टू नो दिस अगर आपने मेरी क्लास के नोट को ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि किचन सिंक एक्चुअली वाज द सब्जेक्ट ऑफ अ पेंटिंग। एक पेंटिंग बनाई थी एक फेमस पेंटर ने, नेम द पेंटर। उसमें उन्होंने क्या किया था? किचन के सिंक की पेंटिंग बना दी थी। देयर वाज लिटरली अ किचन सिंक और साथ में एक टैप थी एंड देयर वाज वाटर रनिंग फ्रॉम दैट टैप। तो इतनी ऑर्डिनरी, इतनी कॉमन प्लेस चीज की जब उन्होंने पेंटिंग बना दी, व्हाट ही बेसिकली मेंटेड कि art can be used to talk about some of the most mundane, some of the most ordinary, some of the most you know normal things, and hence यही चीज जब प्लेज में आ जाती है तो आपके पास डोमेस्टिक सिचुएशन वाले प्लेस को हम किचन सिंक ड्रामा कह देंगे। जॉन ब्रैडबी इज द नेम ऑफ द प्ले राइट, सॉरी द पेंटर, जॉन ब्रैडबी। Palakshi, very good. Next question for you people is, you need to match the following playwrights with the dramatic concepts that they either followed or they proposed. या तो उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया होगा या उसको वो पायनियर किया करते थे, चैंपियन किया करते थे। You have Bertolt Brecht, the German playwright, Antonin Artaud, Luigi Pirandello, and you've got Eugene Ionesco. Eugene Ionesco, थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी, एपिक थिएटर, जिसका जर्मन टर्म क्या है? जर्मन टर्म फॉर एपिक थिएटर इज वर फ्रॉम डंग्स इफेक्ट, मेटा थिएटर एंड थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ओके, कर दो मैच। ठीक है, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा। अभी हम यूनिट नंबर 1 ही कर रहे हैं, है ना? यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, सो या प्लीज आंसर। काफी एविडेंट है, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, डीफैमिलियराइजेशन, एलियनेशन इफेक्ट, तो हम इनको मैच कर देंगे एपिक थिएटर के साथ। तो ए को मैच कर देते हैं 2 के साथ। क्या ए को 2 के साथ मैच करने के लिए कुछ ऑप्शन हमारे सुलझे, कुछ हेल्प मिली? बिल्कुल मिली। अब ऑप्शंस हो गए आपके कम। ठीक है, अब इसमें से सिलेक्ट कर लो एक। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि बर्टोल्ट ब्रेक्ट को मैच करना है विद एपिक थिएटर, विच इज करेक्ट। देन एंटोनिन आर्टवार्ड को मैच करना है विद थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। पिरांडेलो को मैच करना है विद मेटा थिएटर, करेक्ट है। एंड एब्सर्ड थिएटर में यूजीन यूनेस्को के प्लेस भी आ जाते हैं, तो दैट्स योर करेक्ट आंसर। यूजीन यूनेस्को का फेमस कौन सा प्ले है? द बॉल्ड सोप्रानो, द बॉल्ड सोप्रानो। एंड पिरांडेलो का कौन सा फेमस प्ले है? 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। ठीक है, in Shakespeare's King Lear, the subplot involving Gloucester and his sons, this subplot serves to do what? Who are the 2 sons? Edgar and Edmund, है ना? One of them is legitimate, the other one is illegitimate. तो ग्लोसेस्टर के 2 sons होते हैं, Edmund and Edgar, and just like King Lear has a problem with his ultimately जो conflict है प्ले का, वो कहाँ से आता है? Because of the problem of the familial strife between King Lear the father and his daughters. Likewise, यहाँ पे भी बच्चे जो discord आता है, it's because one of the sons is basically illegitimate and the other one is legitimate. And yeah, so how does the subplot help to reinforce? Okay,
I might have answered the question accidentally, but yeah. The subplot actually helps to reinforce the main plot's themes or the filial ingratitude. Filial ingratitude क्या होता है? Familial, ठीक है? Kinship वाला ingratitude, right? A daughter being ungrateful to the father or the sons being ungrateful to the father. So the theme of filial ingratitude and blindness, ठीक है? दोनों ही इसमें होती हैं. Who's the character who becomes literally blind during the course of the play? There's one character who's going to lose their eyesight and become literally blind. Literal blindness किसकी होती है? देखो, King Lear is metaphorically blind because he cannot clearly see the love of his daughter Cordelia. In fact, he cannot see through the sugar-coated words of his two other daughters, Regan and Gondel, but also he cannot see the true love of his daughter Cordelia, right? The honest love, the genuine love. लेकिन जो actual blindness है वो किसकी होती है? Very quickly. The actual blindness, students. एक कैरेक्टर है ना whose eyes are gouged out. It's a very troubling scene in the play. तो एक्चुअल ब्लाइंडनेस किसकी होती है? गुड आफ्टरनून कृष्णा जी. तुम लोगों ने मेजर शेक्सपियर के प्लेस के प्लॉट्स को रिवाइज नहीं किया? ग्लोसेस्टर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, हाँ चलो, please remember literal blindness of Gloucester, figurative blindness of King Lear. The Gloucester Edgar Edmund subplot mirrors the story of Lear and his act of misjudging his own children. Next question, आपको मैच क्या करना है? आपको 3 statements दी गई हैं. You need to pick out the correct statements. And okay, 3 of these statements are about Restoration Age comedy or the Restoration Age plays, जो कि majorly comedy plays थी. चलो कर दो आंसर. Next question. Remember, with the coming of Charles II, with the return of Charles II, इंग्लैंड में क्या हुआ? Return of Charles II happens, और इंग्लैंड में क्या हो जाता है? Monarchy restore हो जाती है in what is called the Restoration period. So, when the Restoration period begins, Charles II ने इंग्लैंड से फ्रांस से वापस आकर कुछ major changes किए थे in England. One of those major changes was he appointed the first poet laureate. तो पहला पोएट लॉरियट जो है दैट वाज ड्राइडन वाज अपॉइंटेड अंडर चार्ल्स II. Secondly, for a first time, women actors were actually allowed to act on stage. Before this age, what was happening is in every single play जहाँ पर भी women characters की roles हुआ करते थे, they were performed by male actors. So for the first time, we have women actors who will step up on the English stage. ठीक है. Third thing is all the restoration plays majorly had sexually explicit language, double meaning innuendos, ऐसे बहुत ही inappropriate, immoral themes हुआ करती थी. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. एंड बचे जो प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को क्लोज करवा दिया था, उसके बाद थिएटर्स विल बी रीओपन्ड ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ चार्ल्स II. सो यस, थिएटर्स की रीओपनिंग होगी 1660 में, करेक्ट है. विटी डायलॉग्स एंड सेक्सुअल फ्रैंकनेस होगा इन द प्लेज. नेम ऑल द रेस्टोरेशन एज कॉमेडी प्ले राइट्स फटाफट से. And then women were allowed to perform on stage. ये भी correct है, तो तीनों statements correct हैं. 1 to 3 is your correct answer. Quickly give me names of all the Restoration age playwrights, Restoration comedy playwrights. चलो, very quickly. By now हम multiple times को discuss कर चुके हैं, कोर्स क्लास में, YouTube क्लास में, अनअकैडमी की फ्री क्लास में, जो ऐप पर होती है. तो सारे नाम मुझे दे दो. 1642 में इंडीड थिएटर्स क्लोज हुए थे. ठीक है, प्यूरिटन्स ने कहा कि जो ये प्लेज हैं ये इमोरल हैं, सो लेट्स जस्ट शट डाउन द थिएटर्स एंड प्लेज परफॉर्म ही नहीं होंगे. बट देन अगेन चार्ल्स II कम्स बैक टू इंग्लैंड एंड उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? थिएटर्स को रीओपन कर दिया था. तो आपके पास जो प्ले राइट्स आएंगे उसमें सबसे पहले आने वाले हैं विलियम कॉनग्रीव. William Congreve, The Way of the World is a very famous play by him. You have Vanbrugh also, a very famous Restoration Age playwright. You've got George Farquhar, he was also a Restoration Age playwright. और कौन था? Quickly, fill up the chat box. Chat box को भर दो with names. Ethege, very good. Ethege, ठीक है. Wycherley तो रह गए, ठीक है. तो I think more or less हो गए सारे. Congreve, Vanbrugh, Farquhar, Ethege, Wycherley. Anybody who's missing? कोई रह तो नहीं गया? हाँ, यही है, ठीक है.
देखो एफ्रा बेन को बच्चे आप रेस्टोरेशन एज की कॉमेडी के प्ले राइट नहीं कहोगे ना, है ना? शी कम्स इन दिस एज, इनफैक्ट आफ्टर बेन ने तो चार्ल्स II के लिए एज अ स्पाई भी काम किया था। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ फैक्ट। आफ्टर बेन शी वाज अ प्ले राइट, शी वाज अ नॉवलिस्ट, उन्होंने रोवर नाम का वर्क लिखा, ओरुनुकू नाम का वर्क लिखा, एंटी स्लेवरी वर्क लिखा, बट शी ऑल्सो हैड वर्कड एज अ स्पाई। तो उन्होंने एस्पियोनाज का काम भी किया था, एंड दैट टू फॉर द किंग हिमसेल्फ, स्पाई का काम किया था चार्ल्स II के लिए, ठीक है? चलिए, एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमन जो अपना प्रोफेशनली फिर प्ले राइटिंग कर रही थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern is best described as an example of which of these? Restoration age satire, absurdist meta theater, historical tragedy, or realist domestic drama? Or realist domestic drama. Next question. Okay. चलो, वी गॉट अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट 100 क्वेश्चंस का सेट है जैसे पेपर 2 में होता है, तो यू नीड टू हरी अप, ठीक है? करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर के हैमलेट से कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं दोनों, रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड टू वेटिंग फॉर गोडो की दो कैरेक्टर्स, एस्ट्रोकॉन एंड व्लादिमिर, बाय both of them are equally purposeless, both of them also deal with the same kind of identity crisis. In fact, Rosencrantz and Guildenstern में that identity crisis will take a step ahead. Why? Because Rosencrantz and Guildenstern एक टाइम पर ये भी भूल जाते हैं that which of them is Ross, which of them is Guildenstern. Imagine, ठीक है? So that's the kind of heightened existential and identity crisis that happens in this play. टॉम स्टॉपर्ड का प्ले है और ये भी आपका एब्सर्डिस्ट ड्रामा में आएगा। प्लीज रिमेंबर टॉम स्टॉपर्ड वाज आल्सो अ फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, तो ये स्क्रीन राइटिंग भी किया करते थे, एंड ही डिड द स्क्रीन राइटिंग फॉर अ वेरी फेमस फिल्म विच इज, कौन सी फिल्म है? द फिल्म इज कॉल्ड शेक्सपियर इन लव। शेक्सपियर इन लव इज अ फिल्म दैट इट इमेजिन्स विलियम शेक्सपियर इन लव। तो इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग किसने की थी? टॉम स्टॉपर्ड ने की थी। So he was a playwright and he was writing for films as well. Next question, the term hamartia in Aristotelian dramatic theory refers to what? Hamartia poetics का term है, Greek term है, इसका English meaning क्या होता है? Specifically for tragic plays. Specifically for tragic plays. Okay. चलो बता। Hamartia. Hamartia is an ड्रामेटिक आयरनी, कोरस की मॉरल कॉमेंट्री, या फिर ट्रैजिक फेटल फ्लॉ, या फिर एरर ऑफ जजमेंट। कभी कभी क्या होता है, अ वेरी सेन, अ वेरी वाइज कैरेक्टर ऑफ गुड सोशल स्टैंडिंग इज अनएबल टू कैलकुलेट a certain judgment, and because of that miscalculation, because of that error in judgment, उनका tragic fall start हो जाता है, tragic downfall start हो जाता है. So hamartia is an error in judgment that ultimately leads to the tragic डाउनफॉल, वो फेटल फ्लॉ है जो कैरेक्टर के अंदर होती है, ठीक है? एंड अदरवाइज परफेक्ट कैरेक्टर, बच्चे ट्रैजिक कैरेक्टर्स का एक प्रोटोटाइप है, दे हैव टू बी अदरवाइज परफेक्ट. किंग लियर इज अदरवाइज अ वेरी परफेक्ट फिगर. He is the king of England. He is very well revered. He is very well respected in his kingdom. He is powerful. He is loved by his subjects. But there's one tragic flaw. He is also prone to flattery. है ना? Likewise, Macbeth is a perfect character. He's brave. He's honorable. है ना? सब कुछ है Macbeth के पास. But he's also prone to ambition, and that leads to his downfall. ठीक है? चलिए, next question for you people is, Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales were written predominantly in which verse form? Heroic couplets में है, terza rima में है, blank verse में है, Spenserian stanza में है. अच्छा, Spenserian stanza में कितनी number of lines होती हैं? पहले you tell me that. Blank verse को master किया था इंडियन लिटरेचर में किसने? एक बहुत ही अर्ली इंडियन पोएट है who brought blank verse to Bengali literature. कौन थे वो? एंड देन ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में किसने मास्टर किया था, ये बता दो. ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में लाया कौन था, ये भी बता दो वेरी क्विकली. टर्जा रिमा के पायनियर कौन थे इटालियन लिटरेचर में? इटालियन लिटरेचर में देयर इज अ क्लासिक वर्क ऑफ इटालियन लिटरेचर व्हिच इज रिटन इन टर्जा रिमा प्रीडोमिनेंटली. व्हाट इज दैट वर्क? आई नो आई हैव थ्रोन क्वेश्चंस एट यू, आई हैव बॉम्बार्डेड यू विद क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहले तो
माइकल मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने बच्चे क्या किया था, ब्लैंक वर्स को बंगाली लिटरेचर में, बंगाली पोएट्री में पॉपुलराइज किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में द सेम टास्क वाज अकम्प्लिश्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिस्टोफर मार्लो ने वो काम किया था। स्पेंसरियन स्टैंजा में हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स डू वी हैव इज माय क्वेश्चन। डिवाइन कॉमेडी बाय दांते में उन्होंने क्या किया, टर्जा रिमा का यूज किया था। इनफैक्ट डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेल, हेवन एंड पर्गेटोरियो, and then every single stanza also contains 3 lines. तो टर्जा रिमा is the फॉर्म जिसमें वो लिखा गया है इटालियन लैंग्वेज में। लेकिन आंसर हमारा करेक्ट क्या है, जॉफ्री चौसर ने अपना कैंटरबरी टेल्स लिखा था हेरोइक कपलेट्स में, यानी आयम्बिक पेंटामीटर की अनराइम्ड लाइंस में। ठीक है, डन। यप, 9 लाइंस होती हैं आपकी टर्जा रिमा में, दैट्स योर करेक्ट, सॉरी नॉट टर्जा रिमा में, स्पेंसरियन स्टैंजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, in metaphysical poetry the term conceit refers to what? The term conceit refers to what? Next question. चलो, मेटाफिजिकल पोएट्री में कंसीट क्या होता है? देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाफोर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सैजरेटेड मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा एंड मे बी उनके बीच में कंपैरिजन की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट्स व्हाई दे कंपेयर। हाउएवर, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स व्हिच आर apparently non-comparable, उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, when two dissimilar things, when two uh, you know uh, unlinked ideas, when two things which are completely different, heterogeneous ideas are brought together and they're compared to each other, ठीक है, ऑलमोस्ट फोर्सफुल कंपैरिजन लगती है कभी कभी वो, दैट इज कॉल्ड कंसीट। तो मेटाफिजिकल कंसीट क्या है, एन एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअली इलैबोरेट मेटाफोर often drawing on unlikely or far-fetched comparisons. Example के तौर पे, the act of sexual intercourse, the act of sexual intercourse being compared to or being likened to the act of a flea biting or sucking the blood, not biting, a flea sucking the blood of two humans, sucking the blood of two humans. ठीक है, जिस तरह की मिंगलिंग ऑफ टू ह्यूमंस होती है इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, that gets compared to when a flea bites these two humans and the blood of these two humans gets mixed in the body of the flea. तो इस तरह की कंपैरिजन, जैसे कि ये जॉन डन की बहुत ही फेमस कंपैरिजन है, these are your metaphysical conceits. ठीक है, अब यही मेटाफिजिकल कंसीट को सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज ही सेड हाउ कैन यू कंपेयर टू थिंग्स व्हिच हैव एब्सोल्युटली नथिंग कॉमन इन बोथ ऑफ देम। लेकिन थॉमस टर्न एलियट ने इसी ग्राउंड पर, इसी क्राइटेरिया पर, यूज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कंसीट पर ही मेटाफिजिकल पोएट्स को अप्रिशिएट किया था, एडमायर किया। ठीक है, द सेम ग्राउंड, प्लीज रिमेंबर, जॉनसन का कहना था कि ए एंड बी अगर ये बिल्कुल डिसिमिलर हैं तो हाउ कैन यू कंपेयर देम, आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किसी मेटाफर के थ्रू कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो। एंड ही सेड कभी कभी जब कंपैरिजन एस्टैब्लिश की जाती है बाय पोएट्स लाइक जॉन डन, इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ इट्स अ फोर्सफुल कंपैरिजन। लेकिन थॉमस टर्न एलियट ऑन द सेम ग्राउंड्स विल praise metaphysical poets by saying that only a true poet can find similarity in dissimilarities. ठीक है, it requires a poet to be really really good and a very strong power of imagination to find common grounds when there is actually no common ground. Next question. The preface to lyrical ballads is a manifesto of English romanticism. Who wrote it? Easy question. Easy peasy. Chalo. Easy question. Preface to lyrical ballads 1800 का वर्क है, 1798 में प्रीफेस ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। अच्छा, who's gonna tell me the advertisement to preface came in which year? Sorry, the advertisement to lyrical ballads came in which year? देखो 1798 में तो प्रॉपर lyrical ballads वर्क पब्लिश हुआ है ना, 1798 witnessed the publication of lyrical ballads. But before the work was published, इसकी ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, यू कैन कॉल इट, जिस तरह का एक टीजर आता है फिल्म का, अ टीजर और अ ट्रेलर ऑफ द फिल्म हैड बीन रिलीज, नॉट द फिल्म, द वर्क। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है टू द लिरिकल बैलेड्स,
ये किस ईयर में रिलीज हो चुकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले ही एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दी थी. देन लिरिकल बैलेट्स कम्स आउट इन 1798. देन 1800 में the second edition of lyrical ballads comes out, and this contains a preface with it, which is considered the manifesto of the romantic era, of the romantic age. At least English romanticism का manifesto ये हो जाएगा. तो the teaser came out in 17. अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होने के बाद एडवर्टाइजमेंट आएगी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? Whoever is saying 1799, मुझे ये बताओ कि जब वर्क ही पब्लिश हो गया तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे आएगी? ना ना, आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ है, करेक्ट है बच्चे. विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोम्स थी, 4 पोम्स थी एस.टी. कोलरिज की, ऑल इन ऑल 24 पोम्स थी, 23 पोम्स थी, बाद में ये पोम्स इंक्रीज हो गई थी. एस.टी. कोलरिज की कौन सी 4 पोम्स थी? Who's gonna tell me that? There were only 4 poems by S.T. Coleridge in this collection of poetry. 1, 2, 3, 4. I'll just name one for you, which is Rhyme of the Ancient Mariner. Rhyme of Ancient Mariner was one of the poems. बाकी 3 poems कौन सी थी कोलरिज की? बता दो फटाफट से, very quickly. बाकी 3 poems कौन सी थी? ठीक है, राइम तो हो गई. कुबला खान यहाँ पब्लिश हुई थी. Foster Mother's Tale. Who said that? Shirita, very good. There is Foster Mother's Tale. हाँ ठीक है. Foster Mother's Tale. क्या एक कॉन्वर्सेशन पोएम भी थी? क्या कोई कॉन्वर्सेशन पोएम भी थी? नाइटिंगेल. यस, हु सेड दैट? वीरपाल कौर. ओके, यस, नाइटिंगेल कॉन्वर्सेशन पोएम. ठीक है. फोर्थ पोएम कौन सी है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. द डंजियन. हु सेड दैट? जे ठाकुर, राइट? द डंजियन. तो जो भी कह रहा था कुबला खान फ्रेगमेंट काफी लेट का है. 1817 के नियर अराउंड कुबला खान आएगा. क्रिस्टोबेल भी बाद का वर्क है बच्ची. The only 4 poems by S.T. Coleridge contained in lyrical ballads were Rhyme of Ancient Mariner, his best known poem, Foster Mother's Tale, Nightingale, a conversation poem, and you've got The Dungeon. यही 4 poems थी. अब इसको learn कर लो, potentially यहाँ से question आ जाएगा. Next question for you people is, John Keats's odes frequently dramatize a tension between the ideal and the actual. They do. Ode to Nightingale, the speaker seeks escape into the bird's timeless song, but is recalled to mortal consciousness by the word forlorn. Forlorn. Speaker hears the song of the nightingale, and just like the nightingale can escape the world, he is also tempted to escape the world, but then he is brought back to the reality. ठीक है. सो ये भी करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. बट क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई या उसका एक वैलिड रीजन है या नहीं, ये बता. जॉन कीट्स के कोड्स में एक्चुअली ये होता है, द आइडियल वर्सेस द एक्चुअल के बीच का कॉन्ट्रास्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओ टू ग्रेसियन अर्न में क्या है? आइडियल सिचुएशन में टाइम वुड स्टॉप, नोबडी वुड एज. जैसे ग्रेसियन अर्न पर एवरीथिंग हैज स्टॉप, लवर्स वुड नेवर पार्ट वेज. लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? टाइम एक्चुअली पासेस, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल डाई, लवर्स सेपरेट, है ना. तो टाइम अलग है. एक्चुअलिटी एंड आइडियल, जो आइडियल सिचुएशंस हैं, दे आर डिफरेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन भी है. अच्छा, जैसे हमने ओ टू ग्रेसियन के केस में डिस्कस किया, नाइटिंगेल के केस में क्या है? नाइटिंगेल के केस में जब नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं आपके स्पीकर, ही सेज, I wish I could just escape this mundane life that I have, this boring life, this life of a human that I'm leading. And I wish, just like the song of the nightingale, I could produce something beautiful. Just like the nightingale that can fly away, I wish I could also have such a flight. But alas, the reality is I am a human, and I'm a mortal human, and I'm destined to continue with my boring life. है ना? ठीक है. चलिए, next question.
Thomas Stern Eliot's concept of objective correlative refers to what? Okay, okay, please answer. I know some of you are traveling students, ठीक है, I know some of you are traveling, इसीलिए try करिए कि कुछ extra additional नया topic नहीं पढ़ना है. I mean you have your exam tomorrow, it makes no sense. बस जो questions हम solve कर रहे हैं इनको solve करते रहो. Also additionally Telegram channel पर I have sent some quick revision charts for you people. तो वो revision charts को एक बार go through करते रहिए. I have tried to make them as visually attractive as possible so that you people don't feel overwhelmed also. एंड आप रिवाइज भी करते रहें. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट सर्व एज अ फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर इमोशन. यानी अगर हम सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ह्यूमन इमोशन को ऑब्जेक्टिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. सोचो मैं आपको एक ऐसे लिखने को देती हूँ अबाउट अ सर्टेन आइडिया. ठीक है, किसी के बारे में आपको एक ऐसे लिखने को देती हूँ. नाउ द आइडिया इज सो नुआंस्ड, उसमें इतनी सारी नुआंसेस हैं कि आप उस आइडिया को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स आइडिया है. ठीक है, डन. लेकिन अगर इसी आइडिया के बारे में मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देती हूँ, आप जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको टिक कर पाएंगे. व्हाई? क्योंकि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सब्जेक्टिविटी इन सब्जेक्टिव टर्म्स वो डिफिकल्ट हो जाता है. हाउएवर अगर हम उसको लोकलाइज कर पाते हैं ऑन टू एन ऑब्जेक्ट, वो इजी हो जाता है. लाइकवाइज जॉन कीट्स ने कहा कि थॉमस स्टर्न एलियट ने कहा दैट क्या करना चाहिए एक राइटर को, किसी भी कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को अगर कन्वे करना चाहता है राइटर टू दी ऑडियंसेस, टू द रीडर्स, they can actually localize the emotion onto an object, a series of events or a situation, and that is called an objective correlative. यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इमोशन को कोरिलेट कर दिया. ठीक है, या टर्म किसने कॉइन किया था? वॉशिंगटन ऑल्स्टन ने कॉइन किया था. The term was coined by Washington Alston. इसको लिटरेरी टर्म्स में कंसेप्टलाइज किसने किया था? थॉमस स्टर्न एलियट ने किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नीड टू मैच द पोएट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स या फिर टाइप ऑफ पोएट्री दैट दे रोट. एज़रा पाउंड, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूग्स, शी मसीनी. कर दो मैच. ओके, चलो चलो चलो, पिकअप द पेस स्टूडेंट्स. बहुत सारे क्वेश्चंस है, पेस पिकअप करना पड़ेगा हमें. अभी तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बट वी आल्सो हैव क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, रीजन क्वेश्चंस थोड़े से आ गए हैं, थोड़े से और भी हैं. काफी सारे मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट्स वाले. जिस तरह के क्वेश्चंस कल आएंगे एग्जाम में वही क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एंड लास्ट में जाकर एक क्लोज का पैसेज भी आएगा. सो आंसर क्या हो जाएगा? एज़रा पाउंड को हम मैच कर देंगे इमेजिज्म के साथ, तो ए को मैच कर देते हैं 2 के साथ. फिलिप लार्किन आपके मूवमेंट पोएट थे, तो बी को मैच कर देंगे 1 के साथ. टेड ह्यूग्स लिखते थे एनिमल पोएट्री, एनिमल इमेजरी वाली पोएट्री, जैसे कि द फॉक्स रूस्टिंग और क्रो और रेवन, ऐसी वाली सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सी को मैच कर देंगे विद 3. एंड आपकी शीमसीनी की बॉक पोम्स हैं. शीमसीनी बाय द वे आयरिश थे, है ना, तो इसको मैच कर देंगे विद, अच्छा लिखा हुआ है आयरिश आइडेंटिटी, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. 4 2 1 3 4 के हिसाब से 2 1 3 4 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about dramatic monologue as perfected by Robert Browning, the Victorian age poet, are true? Dramatic monologue के बारे में which of these statements are true? You've got 3 statements, look at them, answer the question. Okay. The speaker addresses a silent listener within the poem. क्या एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर का मोनोलॉग होता है एंड दैट मोनोलॉग इज एड्रेस्ड टू अ सिंगल listener or a bunch of listeners, but these are silent listeners? Yes. So there's one speaker
who will deliver the monologue, and there is a silent listener in the poem itself. Correct है? The poem reveals the speaker's character often unintentionally through irony. बिल्कुल correct है. For example, the last touches. Example is my last touches. ठीक है? अब last touches में बच्चे the fact कि ड्यूक ने ही डचेस का मर्डर किया है वो रिवील तो होता है बट एक्सीडेंटली रिवील होता है. अनलाइक द अदर पोम पोर्फिरियाज लवर, एक और ड्रामेटिक मोनोलॉग है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग का, हमने क्लास में डिस्कस किया था. पोर्फिरियाज लवर के जो स्पीकर हैं ही द लवर हिमसेल्फ बहुत ही एक्सप्लिसिट टर्म्स में ही अनाउंसेस दैट आई किल्ड पोर्फिरिया माई सेल्फ. इनफैक्ट ही टेल्स अस द वे ही किल्ड हर. ही सेज उसी के बाल मैंने लिए, द गोल्डन हेयर दैट शी हैड, and I wound the golden hair around her neck 3 times, and that's how I suffocated her, choked her, killed her. Right? Unlike this lover, जो आपके ड्यूक हैं My Last Duchess में, he is not very explicit about the act of having killed his own duchess, right? तो implicit तरीके से ही reveals it. तो हाँ, accidentally reveal होता है यानी unintentionally reveal होता है, correct है. My Last Duchess is a classic example of dramatic monologue, ये भी correct है. So all 3 statements are correct. ठीक है, all 3 statements are correct. Ulysses by Alfred Lord Tennyson is also a dramatic monologue because Ulysses is a single monologue speaker and he's talking to his other people who accompany him on the ship, right? Likewise, Dover Beach by Arnold is also a dramatic monologue. Dover Beach में क्या होता है, जो speaker है he's talking to his beloved, to his wife. तो ये भी dramatic monologue का example है. And dramatic monologue की form को perfect किसने किया था? Robert Browning ने किया था, the master of dramatic monologues. Next question for you people is, in Alexander Pope's Rape of the Lock, the genre being mocked or imitated is what? Next question. चलो कर दो आंसर. Alexander Pope के mock dash में he mocks a certain literary form. तो Alexander Pope ने कहा कि I'm gonna pick the literary form of works like Paradise Lost, जो ग्रैंड वर्क्स हैं, ग्रैंड सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में है, जिसमें गॉड्स तक की इन्वॉल्वमेंट होती है, बैटल्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, होमर का इलियड एंड ओडिसी एंड पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, उस तरह की फॉर्म ऑफ राइटिंग को मैं यूज करूंगा. बट मेरा सब्जेक्ट मैटर इतना ग्रैंड नहीं होगा, रादर मेरा सब्जेक्ट मैटर बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा. यानी छोटी सी इनसिग्निफिकेंट चीज को लिखने के लिए मैं ग्रैंड नैरेटिव स्टाइल का यूज करूंगा. इनफैक्ट जितनी भी एपिक कन्वेंशंस हैं इन मीडिया स्ट्रेस उसका यूज करूंगा. ठीक है, सो दिस वाज मॉक एपिक एंड दिस वाज द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ही इवन इन्वोक्स टू द म्यूजेस, जिस तरह से मिल्टन करते हैं ना इन्वोकेशन टू द म्यूजेस टू ब्लेस हिम so that he can create such a great work of art. So he also invokes the muses, right? Use of supernatural machinery and heroic battles also to talk about a trivial societal incident for satiric or ironic effect. Next question, the Petrarchan sonnet as adapted into English characteristically divides into which structural parts? Basically question कहता है कि Italian sonnet का structure क्या होता है. इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था. देयर वर 3 क्वार्टेन्स फॉलोड बाय अ कपलेट. इनफैक्ट जो आपका सबसे पहला स्टैंजा था वो एक इंग्लिश सोनेट ही था. तो पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इटालियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन और पेट्रार्कन sonnet which was originally an Italian form of poetry, it was brought to England later. So इसमें आपके पास बचे originally the set of 14 lines. उन 14 लाइन्स को डिवाइड किया जाता था इनटू अ सेट ऑफ 8 and 4. 8 लाइन्स का स्टैंजा हुआ करता था कॉल्ड एन ऑक्टेव, और एक 6 लाइन्स, नॉट 4 लाइन्स का, 6 लाइन्स का स्टैंजा होगा व्हिच वाज कॉल्ड अ सेस्टेट. तो ऑक्टेव एंड सेस्टेट का ये जो कॉम्बिनेशन है वुड मेक अप द 14 लाइन्स ऑफ सोनेट. ठीक है, सो या एंड देयर वुड बी अ वॉल्टा, अ टर्न बिटवीन देम. तो क्या होगा, there would be, जैसे कि आपके 4 वो है ना, प्लीज फोकस नाउ, प्लीज फोकस. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, यू हैव stanza number 1 which is a quatrain, stanza number 2 is a quatrain, stanza number 3 is a quatrain and stanza number 4 is a couplet, है ना. तो stanza number 1 to 3 में इन तीनों quatrains में the author builds upon an idea and then suddenly reverses or contradicts or resolves that idea in the couplet. तो couplet में हमें resolution मिल जाता है. Likewise वो जो टर्न ऑफ इवेंट्स है, वो जो टर्न ऑफ थॉट है, वो पेट्रार्कन सोनेट में कब आता है, जब हम ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ शिफ्ट करते हैं एंड द टर्न इज कॉल्ड
The turn is called volta. Done. Next question. Yeah, turn is that shift. Sylvia Plath's poem Daddy is most frequently read by critics through which thematic critical lens? Hmm. Sylvia Plath, being a confessional poet, did not shy away from talking about her family relations, her not so good relations with her father in her poem titled Daddy. Okay? Now, in a typical confessional poetry mode, she talks about the father and also she says, my father's relationship with me was something like the relationship of a Jew with a Nazi. ठीक है, तो ये जो हॉलोकॉस्ट वाली इमेजरी इन्होंने यूज कर ली थी, दिस हैज बीन मच डिबेटेड, मच क्रिटिसाइज्ड आल्सो, राइट? सो कन्फेशनल पोएट्री emerged engaging with personal trauma, the father figure and the holocaust image. ठीक है, डन. ये देखो, Daddy is a key text of confessional poetry, using shocking Holocaust imagery and direct address to dramatize the speaker's fraught relationship with her father and by extension the patriarchal authority. Next question, which poetic device is prominently used by Hopkins? नहीं, Hopkins का जो prominent device है sprung rhythm, exactly होता क्या है? That's your next question. चलो करो आंसर. Hopkins का device sprung rhythm. What is sprung rhythm exactly? जीएम हॉपकिंस, लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपको इनको बर्थ ईयर्स के हिसाब से अरेंज करना पड़े तो ये विक्टोरियन एज में बर्थ होगा. पब्लिकेशन ईयर्स के हिसाब से तो इनकी सारी की सारी पब्लिकेशंस मॉडर्न एज में आएंगी. ठीक है, so he was born and he died in 19th century, but his work was published in 20th century thanks to his dear friend, who was the friend who got all his work published because because हॉपकिंस ने अपनी लाइफ टाइम में अपनी पोएट्री को पब्लिश नहीं करवाया था. इंस्टेड आफ्टर ही डाइज, तो एक फ्रेंड ने, हु इज आल्सो अ पोएट हिमसेल्फ, उन्होंने इनके वर्क को पब्लिश करवाया था. हु इज दैट फ्रेंड? आंसर हो जाएगा काउंटिंग ओनली स्ट्रेस सिलेबल्स, अलाउइंग वेरिएबल अनस्ट्रेस सिलेबल्स. दैट इज योर स्प्रंग रिदम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. टॉम जोन्स का टाइटल क्या है कंप्लीट? टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. Henry James, Tom Jones founding. Okay, कर दो आंसर. So it is generally regarded as a landmark in the development of which novelistic mode? That's your next question. Is it a gothic novel? Definitely no. Is it a novel of sensibility? या फिर ये novel of sensibility को mock करने वाली novel है? This parodies, this makes fun of, this mocks fun at a novel of sensibility. तो अपने आप में this is not a moral, novel of sensibility. इज इट एन एपिस्टरी नॉवल? क्या ये लेटर फॉर्म की नॉवल है? लेटर फॉर्म की नॉवल भी नहीं है. कॉमिक नॉवल है? बिल्कुल कॉमिक नॉवल है. प्रोज में है तभी तो नॉवल है. यस, इंडीड. आई मीन प्रोज में नहीं, कभी कभी नहीं भी होती है नॉवेल्स, बट ट्रेडिशनली नॉवेल्स आर रिटन इन प्रोज. दैट्स योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेन ऑस्टन्स नैरेटिव टेक्निक ऑफ pre-indirect discourse is notably used to do what? In Jane Austen's novels, especially in a novel like Emma, ये जो प्री इनडायरेक्ट स्पीच डिस्कोर्स है, ये यूज किया जाता है फॉर व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह से ऑब्लिक नैरेटिव का यूज करते थे, कौन यूज करते थे ऑब्लिक नैरेटिव का? ऑब्लिक नैरेटिव होती है बच्चे इनडायरेक्ट नैरेशन, है ना? डायरेक्टली आपको स्टोरी ना बताकर किसी और के थ्रू जब आपको कहानी बताई जाती है, दैट इज ऑब्लिक नैरेटिव. ऑब्लिक नैरेटिव का यूज किया करते थे जोसेफ कॉनराड. ठीक है, जोसेफ कॉनराड अपने वर्क्स में यूज करते थे ऑब्लिक नैरेटिव का. फॉर एग्जाम्पल, Joseph Conrad's Heart of Darkness is narrated by Marlowe. Marlowe is a character in Heart of Darkness. So Marlowe tells us the story of Joseph Conrad's Heart of Darkness. But does he tell us the story? No. In fact, he's on a boat, he's on a ship, and he tells the story to the fellow passengers on the same ship. Now, as he tells the story to them, as he narrates the story to them, we also get to hear the story. ठीक है, तो टेक्निकली इनडायरेक्टली हमें स्टोरी मिलती है, विच इज ऑब्लिक नैरेटिव. राइट, हार्ट ऑफ डार्कनेस परफेक्ट एग्जाम्पल. ऐसे ही जेन ऑस्टन की राइटिंग्स में बच्चे जो नरेशन का स्टाइल है, दैट इज फ्री इनडायरेक्ट स्पीच. क्या है ये राइटिंग स्टाइल? ब्लेंडिंग द नैरेटर्स वॉइस विद द कैरेक्टर्स थॉट्स विद कोटेशंस एज इन द नॉवेल एमा. दैट्स योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई डिड नॉट रिमेंबर कि अगला यही क्वेश्चन है. In Conrad's Heart of Darkness, what is the narrative frame? What is the narrative frame?
Hmm. Yeah, so Parakshi, technically you people are also the passengers, or you people are the bypassers. ठीक है, बस आप क्या करते हैं, you overhear the story. Story is not intended for you. मार्लो कहानी बता रहे हैं to another bunch of people and you just happen to hear it. It was not intended for you, hence oblique, hence indirect. जोसेफ कॉन्राड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस में आपके पास फ्रेम नैरेटिव का यूज है, मतलब स्टोरी विद इन अ स्टोरी है. द बिगर स्टोरी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि कॉन्राड की नॉवेला है हार्ट ऑफ डार्कनेस. एंड विद इन द स्टोरी जो मार्लो कहानी बताएंगे तो फ्रेम नैरेटिव हो गई. एम्बेडेड स्टोरी है ना, तो फ्रेम नैरेटिव है बिल्कुल. मार्लो रिकाउंटिंग हिज स्टोरी टू द लिसनर्स ऑन द शिप का नाम क्या है बच्चे? नेली इज द नेम ऑफ द शिप. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. इसका नाम दिया जाता है ऑब्लिक नैरेटिव. ठीक है, चलो. James Joyce's Ulysses structurally parallels which classical text? Easy peasy question. Easy. James Joyce, Irish novelist known for novels like Ulysses, Finnegan's Wake, very experimental, very typical modern novel जो है वो इनकी है. 20th century writer. He was born in the same year when Virginia Woolf was also born, by the way. His best known novel, Ulysses, was published in the year 1922. Um, ओके. इनफैक्ट एक बार ना जॉयस ने अपनी एक नॉवल की ड्राफ्ट को सबमिट किया था टू हॉगवर्ड प्रेस. हॉगवर्ड प्रेस को कौन ओन करता था? मॉडर्न एज के राइटर है वो भी. तो जॉयस रोट अ नॉवल एंड जॉयस सबमिटेड दैट नॉवल टू द हॉगवर्ड प्रेस फॉर कंसिडरेशन कि वो पब्लिश हो जाए. बट द प्रेस रिजेक्टेड द नॉवल सेइंग इट वाज बिट टू एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, बाद में जाके किसी और ने पब्लिश किया था. या सो द करेक्ट आंसर इज, आंसर हो जाएगा होमर का ऑडिसी है, उसका ही मॉडर्न रीवर्किंग है इंग्लिश में, विच इज कॉल्ड यूलिसिस. करेक्ट है. यूलिसिस के बच्चे जो इवेंट्स हैं दे टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वन डे ओनली. कंप्लीट जो स्टोरी है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. अच्छा, बाय द वे रिसेंटली वी ऑल्सो हैड अ डे. जून में एक डे होता है विच इज कनेक्टेड टू जेम्स जॉयस. व्हाट इज दैट डे? हु इज गोना टेल मी? इन द मंथ ऑफ जून there's a specific day that is connected to James Joyce. ठीक है, इस डे को ऑब्जर्व भी करते हैं, लिटरेचर के वर्ल्ड में सेलिब्रेट भी करते हैं. अनदर आइडिया दैट आई कैन गिव यू, अनदर हिंट इज, दिस वाज आल्सो द डे दैट वाज चोजन बाय सिल्विया प्लैथ एंड टेड ह्यूग्स टू गेट मैरिड ऑन. तो ह्यूग्स एंड प्लैथ ने इस दिन को चूज किया था टू गेट मैरिड और टू गेट एंगेज. ठीक है, तो कौन सा दिन था? ब्लूम्सडे. यस. एंड ब्लूम्सडे का कौन सा दिन होता है? व्हाट जून इज कॉल्ड ब्लूम्सडे? ये जो वन डे है ना ड्यूरिंग विच द एंटायर नॉवल यूलिसिस टेक्स प्लेस, वो कौन सा डे होता है? इट इज इन द मंथ ऑफ जून एंड द डे इज 16 जून. क्वेश्चन आ सकता है 16 जून. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डैलवी इज अ लैंडमार्क स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. क्या इस नॉवल का जो नैरेटिव टेक्निक है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है? इफ यस, द नॉवल कंप्रेसेस इट्स नैरेटिव इनटू अ सिंगल डे. क्या ये नॉवल के इवेंट सिंगल डे में होते हैं जस्ट लाइक यूलिसिस? And fluidly moves between characters' inner perspectives without conventional chapter breaks. Is that true as well? चलो बता. वर्जीनिया वुल्फ्स मिसेस डैलवी इंडीड एक दिन के कोर्स में ही पूरी नॉवल कंप्लीट हो जाती है. इट इज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ वन डे ओनली. ठीक है. क्लैरिसा डैलवी हमारी मेन कैरेक्टर हैं. शी इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, शी इज गोइंग टू पार्टी, एंड पूरे दिन वो क्या कर रही होती हैं? शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी. Right, she's basically a woman of aristocratic class. She's a woman of high class in London, and throughout the day she's prepping for a party. जैसे आप किसी को पार्टी पे इनवाइट करते हो, पूरे दिन पार्टी की तैयारी करते हो, खाने का सामान लाते हो, ड्रिंक्स लाते हो, घर को सजाते हो. तो she sets out in the morning. In fact, the novel begins by announcing that Clarissa Dalloway announced that she will get the flowers herself. है ना? तो ओपनिंग वहां से होती है, एंड उन्हीं के थॉट्स के थ्रू, जो कि थॉट्स किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दैट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, राइट, उनकी कॉन्शियसनेस के थ्रू आपको कहानी के इवेंट्स पता लगते हैं. द स्टोरी मूव इन एंड आउट ऑफ हर माइंड. मतलब कभी कभी आप इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर हैं. यू कैन लिटरली गेट एन इनसाइट इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, एंड समटाइम्स यू आर आउटसाइड द माइंड एंड यू आर बीइंग टोल्ड द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. रीजन इज एक्चुअली अ गुड जस्टिफिकेशन, अ सॉलिड जस्टिफिकेशन फॉर द assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज,
Which of the following novels by Hardy is set in the fictional region of Wessex? Also tell me Hardy's first novel to use this setting. दो चीजें बतानी है. Out of these four novels, which novel is set in the fictional town called Wessex जो हार्डी ने इन्वेंट किया था, just like मालगुडी इन्वेंट किया था आर के नारायण ने. Likewise, you need to tell me Wessex में set होने वाली first novel to be set in Wessex. First novel by Hardy, of course, to be set in Wessex. Also, you've got to tell me first novel or first work by R.K. Narayan to be set in Malgudi. To be set in Malgudi. Okay, दोनों बता दो very quickly. यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर बच्चे आंसर तो ऑब्वियस ही है, बिकॉज एक ही नॉवल है हार्डी की, बाकी नॉवेल्स तो हार्डी की है ही नहीं. So that solves the answer itself. But yeah, the first novel is Far from the Madding Crowd. ठीक है. And the first novel by R.K. Narayan to be set in Malgudi. Malgudi is also a setting which was used by R.K. Narayan in multiple works by him. So major work कौन सा था? पहला work कौन सा था? That was called Swami and Friends. Swami and Friends was published in which year? Swami and Friends ने career start किया, kick start किया R.K. Narayan का career. So this was not simply the first novel set in Malgudi. This was also the first work by R.K. Narayan. ये नारायण का पहला work भी है, debut work है. And the publication year is 1935. Indeed, 1935. Next question for you people is, you need to read these statements about Gothic novels or Gothic fiction, and आपको pick करनी है correct statements. Horace Walpole's Castle of Otranto is considered the founding text of Gothic fiction. Is that true? The genre typically features supernatural elements, decaying settings, and a sense of terror. Is that true? Mary Shelley's 1818 novel Frankenstein is frequently discussed within the Gothic tradition. Is that true? देखो, मेरी शेली के नॉवल में बच्चे sci-fi elements भी हैं, है ना? Sci-fi elements हैं because ultimately the creature is created out of a scientific experiment. तो sci-fi नॉवल भी उसको हम कह देते हैं, उसको हम सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वाली नॉवल भी कह देते हैं, उसको हम गॉथिक नॉवल भी कह देते हैं. ठीक है, तो मेरी शैली वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और होरेस वॉलपोल की नॉवल इंडीड इज द फर्स्ट गॉथिक नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है. तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विदाउट डाउट. यप. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, आपको मैच करना है novelists go with the narrative innovations that they used in their novels. Who do we have? We have Lawrence Sterne, we've got William Faulkner, we've got Gabriel Garcia Marquez, the Colombian writer, and we've got the Russian American writer Vladimir Nabokov. ठीक है. Magic realism, unreliable self-conscious narration, ब्रैकेट में ललिता भी तो लिखा है ना. अच्छा, वर्क्स लिखे हैं बच्चे, इट बिकम्स वेरी इजी, फिर तो बहुत आसान हो गया. Digressive, self-interrupting narrative of Tristram Shandy, and The Sound and the Fury, multiple fragmented narratives. चलो बता दूँ. Okay. Ideally, I should have removed the titles of the works, but I might have just forgotten. ठीक है, बहुत सारे questions कभी-कभी जब आप लोगों के लिए frame करने होते हैं, तो कभी-कभी ऐसी चीजें overlook हो जाती हैं. Otherwise ये होना नहीं चाहिए था. ये टाइटल्स नहीं होने चाहिए थे क्वेश्चन में. ट्रिस्टम शैंडी इज बाय लॉरेंस स्टर्न, अब तो ऑब्वियस हो गया. इस नॉवल में क्या है, ट्रिस्टम शैंडी अपनी स्टोरी बताते हैं बहुत सारी डाइग्रेशंस के थ्रू. ठीक है, इनफैक्ट बच्चे नॉवल के थर्ड पार्ट में जाकर तो ये अपने बर्थ की मेंशन कर पाते हैं, क्योंकि इतनी डाइग्रेशंस के साथ ये कहानी बताते हैं दैट ही डज नॉट इवन कम टू द पॉइंट वेरी इजीली. तो डाइग्रेसिव सेल्फ इंटरप्टिंग नैरेटिव है ट्रिस्टम शैंडी की लॉरेंस स्टर्न. एंड मल्टीपल फ्रेगमेंटेड नैरेटर्स हैं. कितने नंबर ऑफ नैरेटर्स हैं आपके पास? साउंड एंड फ्यूरी में हमने डिस्कस किया था. विलियम फॉकनर की नॉवल में हाउ मेनी नंबर ऑफ नैरेटर्स डू वी हैव इन साउंड एंड फ्यूरी? द टाइटल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी इज बोरोड फ्रॉम वेयर? द टाइटल कम्स फ्रॉम वेयर? ये भी बता दो. गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ही इज द पायनियर ऑफ, देखो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में वैसे भी देयर इज एन अबंडेंस ऑफ मैजिक रियलिस्ट नॉवेल्स, बट गैब्रियल गार्सिया मार्केज विद हिज 100 years of solitude gives us one of the best examples of a magic realist novel. व्लादिमीर नोबोकॉव ने अपने वर्क्स में ललिता जैसे वर्क्स में यूज किया था अनरिलायबल सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर को.
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इज योर करेक्ट आंसर. बट गिव मी द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. हाउ मेनी नैरेटर्स डू वी हैव इन साउंड एंड फ्यूरी एंड वेयर डज द टाइटल कम फ्रॉम? द टाइटल कम्स फ्रॉम मैकबेथ. ठीक है, मैकबेथ की सॉलिलोक्वी है जिसमें ये लाइंस आती हैं साउंड एंड फ्यूरी. ठीक है, हाउ मेनी नैरेटर्स डू वी हैव इन साउंड एंड फ्यूरी इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने हैं? मल्टीपल नैरेटर्स है ना, तो मल्टीपल कितने नैरेटर्स हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बिकॉज ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ नैरेटर्स इन साउंड एंड फ्यूरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, 1929 का वर्क है, दैट इज ओके. बट नंबर ऑफ नैरेटर्स, जब तक आई डोंट गेट द करेक्ट आंसर वी आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड. हाउ मेनी नंबर ऑफ नैरेटर्स डू यू हैव इन साउंड एंड फ्यूरी? चलो, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है because this is not a first time we are discussing this. ठीक है, not a first time we are discussing this. Okay. Next question for you people is, in a picaresque novel, the protagonist is typically characterized as being what? एक picaresque novel में जो main character है आपका वो क्या होता है? Is a typical picaresque protagonist also a hero or an anti-hero or a villain or what? See, in ideal terms, हम कहते हैं the main character of any work is the hero. In this case, however, protagonist is not heroic. In fact, the protagonist possesses everything that a hero does not possess. Right? तो protagonist आपका बचे low born होगा, roguish होगा, mischievous होगा, troublemaker होगा, sometimes criminal तक होता है. A roguish, low born wanderer who survives through wit and of course of episodic adventures, that's your picaresque novel. और इस ऐसे प्रोटैगनिस्ट को हम क्या बोलते हैं? पिकारो. पिकारो इज एक्चुअली अ स्पेनिश वर्ड. ठीक है, ये जो स्पेनिश वर्ड है पिकारो, इससे आपके पास क्या आ जाता है? पिकरेस्क नॉवल. पिकारो मतलब होता है रोग. रोग मतलब होता है गुंडा. राइट, हाउ यू गेट इट? तो आपके जो पिकरेस्क नॉवेल्स के हीरोज होंगे या प्रोटैगनिस्ट होंगे, दे कैन इवन बी क्रिमिनल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Beloved by Toni Morrison engages most directly with which historical and thematic concern? Okay. Harlem Renaissance, post-World War II suburban alienation, the Great Depression, or the trauma and legacy of slavery. Beloved was a Pulitzer Prize-winning novel by Toni Morrison, and the woman's seed was actually based on a real woman. And in fact, ये जो पूरा story का plot है was inspired by a real story. The character of Seed was based on a real figure. Name that figure. The character of Seed was based on a real figure. Name that figure. Chalo, very very quickly name that figure. Obviously, slave narrative here, it's about a slave woman who's trying to protect her children from the same fate of slavery, and so the only alternative that she sees, the only way she sees to protect her children from the same brutal fate of being a slave is by killing them. So she decides to kill them. And Margaret Garner, yes, Margaret Garner was a real woman. ये एक अमेरिका में एक्चुअली केस हुआ था जहां पर मार्गरेट गार्नर नाम की एक वुमन थी, and she killed her own children. Why did she kill her own children? She had already killed one of the children. She was about to kill another of her babies when she was found out by the police. Okay? So, and she did all this because she was trying to protect her child from slavery. So, Seed also does the same thing in the novel. Magic realist novel है, by the way. This is a Pulitzer Prize winning novel and इसमें magic realism के कुछ elements भी हैं. ठीक है, ghost है इसमें, ghost. Magic realism plus it's a Pulitzer Prize winning novel by Toni Morrison. Toni Morrison was also, by the way, a Nobel laureate. है ना? She was also a Nobel Prize winning writer, African American writer. She was the first African American writer to win the Nobel Prize for Literature. Next question is, Bildungsroman is a novel that has what? What is Bildungsroman? The word Roma here means novel. Bildungsroman, Kunstelroma. तो रोमा का मतलब क्या होता है? नॉवल.
So novel that does what is called a Bildungsroman? बताओ. Yes, Sound and Fury has 4 narrators. As I Lay Dying has 15 narrators. Imagine. ठीक है? As I Lay Dying has 15 narrators in all. Done? Yep, yep, yep. Bildungsroman is a novel of education. So Jane Eyre is a Bildungsroman. David Copperfield is a Bildungsroman, a novel in which you witness the growth. And when I say the growth, not in terms of age, in terms of everything, you witness the growth, the moral development, and the maturity of a protagonist from their childhood years till their adulthood. That is called a Bildungsroman. Okay, Jane Eyre, perfect example of a Bildungsroman novel. Next question for you. See, it comes from the German word. Bildungsroman का मतलब होता है a formation novel, right? It designates novels facing a protagonist's psychological, moral and social development. For example, Great Expectations में आपके पास Pip की आप growth देखते हो. So this is a Bildungsroman. James Joyce's a portrait of an artist by of a young man. This is also a Bildungsroman. Although this is a specific kind of Bildungsroman which is called a Kunstelroman क्योंकि ये artist की growth के बारे में particularly है. So a Bildungsroman about an artist becomes a Kunstelroman. Francis Bacon's essays are noted for which characteristic prose style? Next question. Bacon के essays किस तरह के essays हैं? What kind of essays did Bacon write? Next question. Francis Bacon, he was the father of English essays. He was the father of English essays. And Montaigne was the father of French essays. Montaigne was the father of French essays. फ्रेंच एसे की जो फॉर्म है उसको मॉन्टेन ने पायनियर किया था और इंग्लिश एसे की फॉर्म को चैंपियन किया था फ्रांसिस बेकन ने. फ्रांसिस बेकन इज आल्सो द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, बैरन वेरुलम. He was also a scientific martyr because he died while he was trying to conduct a scientific experiment. इसीलिए he is said to have been a scientific martyr. Advancement of Learning is a very famous work by him. Novum Organum is a work by him. And इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए थे. ऑल्सो ही कम्स इन जैकोबियन एज एंड इनका मेजर वर्क क्या है? यूटोपियन नॉवल कॉल्ड न्यू एटलांटिस. हमने न्यू एटलांटिस क्लास में डिस्कस भी किया होगा काफी डिटेल में. दैट इज हिज यूटोपियन नॉवल. आंसर क्या हो जाएगा? टर्स अफोरिस्टिक स्टाइल मार्क्ड बाय ब्रेविटी एंड पिथी मैक्सिम्स, राइट? टू द पॉइंट मैक्सिम्स. कम वर्ड्स को यूज करके, शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस को यूज करके. That's your Francis Bacon. Next question. Jonathan Swift, A Modest Proposal is a classic example of which rhetorical mode? Gibellian satire, pastoral elegy, gothic horror essay, or sentimental memoir? Jonathan Swift. Yes, Pensalem. Chalo. The answer is yes, indeed. Juvenile satire using a deadpan, ironic persona, which is Jonathan Swift is the master of satire. Be it A Modest Proposal, be it other works by him. So that's your correct answer. Which essayist is most associated with the personal, informal, and digressive familiar essay in the romantic period? Essay write हैं, essayist हैं, romantic age के essayist हैं. The kind of the essays that he wrote were personal, they were obviously subjective, they were informal, and they had a lot many digressions in them. Who are we talking about? Oh, there's only one person who belongs to romantic period, so that solves the entire question. We are talking about the essayist of romantic age, Charles Lamb, who wrote his essays under the pseudonym Elia, which is why his essays are titled Essays of Elia. Essays of Elia भी कहते हैं, कभी-कभी Elia कहते हैं. So that's your correct answer. Essays of Elia. ठीक है? Done? चलो. Next question is,
Matthew Arnold's Culture and Anarchy introduces which influential set of social classifications? Arnold's Culture and Anarchy, it gives us three classifications for three classes of society. वो कौन से थ्री नेम्स हैं जो आर्नल्ड ने स्पेसिफिकली यूज किए थे? बुर्जुआजी, प्रोलेटरिएट्स एंड एरिस्टोक्रेसी, ये तो काफी मार्क्सियन टर्मिनोलॉजीज हैं. बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स, पॉपुलेस, elect, reprobate and saved, urban, rural and colonial. No, Arnold said, well, there are those who do not care about arts at all. Those are the Philistines. ठीक है, Philistines कौन है बच्चे? आपकी middle classes हैं. And there are those who are basically involved in the survival. These are the working classes. These are your populace. And the aristocratic classes, ठीक है, are the barbarians. So that's your correct answer. Next question. Orwell's essay Politics of the English Language, Politics and the English Language, ये हमने क्लास में डिस्कस की है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कवर किया होगा ये हमने. Primarily argues what? George Orwell, writer of 1984 and Animal Farm. Animal Farm published in the year 1945. Animal Farm published in the year 1945 and 1984 published in the year 1949. 1949 ki 1984 was a dystopian novel. It was a dystopian novel, right? And Animal Farm was actually a political allegory of the Russian Revolution. Political allegory of the Russian Revolution. ऑरवेल का राइटिंग करियर स्टार्ट होगा, नॉवल राइटिंग करियर स्टार्ट होगा विद बर्मीज डेज. ऑरवेल्स रियल नेम वाज एरिक आर्थर ब्लेयर. Eric Arthur Blair was his real name. His real name, ठीक है. And he was born where? He was born in Bihar. He was born in British India. Where in Bihar specifically? In Motihari. And besides being a novelist, he was also a journalist. He also mourned or lamented the fact the modern age में 20th century the English language had become corrupted. And he suggested some remedies or some ways to refine the English language. The core idea क्या है इस essay का? He said that English language should be clear, concrete language, and it should be able to resist all the kind of vague, euphemistic political rhetoric that obscures the actual intended thought. Next question for you people is, you need to read these three statements from Samuel Johnson's Preface to Shakespeare and tell me which of these is correct. Chalo, karo answer. Okay. प्रीफेस टू शेक्सपियर में सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था? अच्छा, प्रीफेस टू शेक्सपियर का ईयर बताइए पहले. प्रीफेस टू शेक्सपियर बाय सैमुअल जॉनसन, पब्लिकेशन ईयर वाज व्हाट? 18th century, but 18th century के भी second half में exactly कब? It condemns Shakespeare's mixing of tragic and comic elements as a grave artistic fault. क्या सैमुअल जॉनसन ने ये admit किया था that Shakespeare ended up mixing two distinct genres? Tragic comedies लिखी थी शेक्सपियर ने, which mixed the conventions of tragedy and comedy, which should have been removed, remained aloof. Did he criticize it? No, he did not. He did not. He said, well, tragicomedy is an English innovation. And Shakespeare was very right to combine tragedy and comedy because this is exactly what happens in real life, where a human life consists of both sorrows and sorrows and joys. So he said, why not do it in art as well? So option number one to देखो correct है. Statement one to correct है. It criticizes Shakespeare's frequent disregard for dramatic unities. Did Samuel Johnson actually criticize Shakespeare because Shakespeare disregarded dramatic unities? No. In fact, he defended Shakespeare. कि ठीक है, शेक्सपियर ने ड्रामेटिक यूनिटीज नहीं फॉलो की, बट व्हाट्स द बिग डील? जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक यूनिटी है, द यूनिटी ऑफ एक्शन, वो तो शेक्सपियर ने फॉलो की ना. द रिमेनिंग टू यूनिटीज, प्लेस एंड टाइम, दे आर अननेसेसरी, ही सेड, राइट? तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चे? गलत हो जाएगी. ठीक है, गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट. ही डिड नॉट क्रिटिसाइज शेक्सपियर. In fact, he defended Shakespeare. And next is, it praises Shakespeare's characters as drawn from real observable human nature. ये correct है. तो अब इस हिसाब से तो बच्चे आपका आंसर है ही नहीं क्वेश्चन पे. नहीं, आंसर है 1 and 3 करेक्ट है ना. आई एम सो सॉरी, 1 and 3 है, करेक्ट है. अच्छा, who said 1 2 3? Who said 1 2 3? I can see everybody has given me different answers.
या 1765 इज द पब्लिकेशन ईयर, हमने कल ही लर्न किया था. 1755 में जॉनसन केम आउट विद हिज डिक्शनरी. 1765 में द प्रीफेस कम्स आउट. Why is everybody giving me different answers? First statement में he condemned Shakespeare for mixing tragedy and अच्छा he did not condemn Shakespeare. He defended Shakespeare. तो ये गलत है statement. Statement 1 is incorrect. Statement 2 में he criticized Shakespeare's use of disregard for ये भी आपकी incorrect है. He praises Shakespeare's characters as drawn from real observable, ये बच्चे एक ही statement correct है यहाँ पर आपका. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, तो कौन सा आंसर होगा? यू पीपल आर ऑल कंफ्यूज विद दिस क्वेश्चन एंड आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली. अच्छा, फॉरगेट एवरीथिंग, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं. जस्ट टेल मी वन थिंग, इज स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? गिव मी करेक्ट और नॉट. इज स्टेटमेंट वन करेक्ट, इज स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट? बस ये बता दो. Did Samuel Johnson condemn the fact that Shakespeare ने ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को मिक्स किया था इन ट्रैजिक कॉमेडीज? बताओ बताओ बताओ. यू पीपल आर सो कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बच्चे गलत है, शेक्सपियर को कंडेम नहीं किया था, डिफेंड किया था. ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, did he criticize the fact that Shakespeare had disregarded the three unities? Is this correct or is this incorrect? Give me a 2 correct or 2 incorrect in the chat box. Statement 2, is it correct or is it incorrect? Did he criticize Shakespeare because Shakespeare unities को completely regard नहीं कर पाए, all three unities को? No, ये भी आपकी incorrect है. ठीक है, the only correct statement is, this is your correct statement. He said Shakespeare was a poet and a playwright of nature, and when he says nature, he says not the kind of nature जिसमें mountains and trees हैं, the human nature, and he was a very keen observer of human nature. And since he was a keen observer of human nature, that also compensated for the fact that Shakespeare did not have enough formal learning, because formal learning की उन्हें जरूरत ही नहीं थी. He had this genius in him. So statement 3 correct है, and on that basis आपके options में कोई भी option correct नहीं होगा. ठीक है, this was a trick question, इसीलिए देखो इस question का मैंने साथ में आंसर इंक्लूड ही नहीं किया है. Otherwise, I always include the answers to every question. There's a question, there's an answer, and there's a slight explanation that I basically add ताकि आप जब PDF आप receive करो तो आप read कर पाओ. लेकिन यहाँ पे I did not add that because this is a trick question. This was meant to confuse you because net ऐसा कर देता है कभी कभी. ठीक है, एग्जाम में ऐसा हो जाता है, बाद में वो क्वेश्चन चैलेंज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट बच्चे आपको पता तो लगना चाहिए था ना कि क्वेश्चन गलत है. किसी ने बोला क्यों नहीं कि क्वेश्चन गलत है? बताओ, क्यों नहीं बोला? चलो जस्टिफाई करो कि क्यों नहीं बोला कि क्वेश्चन गलत है. चलो next question. Virginia Woolf's Room of One's Own advances the central argument. What is the central argument? Easy question. Virginia Woolf's central argument of her work. Male and female writing are indistinguishable. Women need formal education above all else. Did she argue that women have to have education because she was a feminist thinker? है ना? A woman needs money and room of one's own if she is to write fiction without any constraints. Fiction should avoid political themes entirely. No, she said a woman has to have a space of her own, a room of one's own. And how much money did she say? Annually, a woman needs how much money? अगर उनको freely without any constraints, अगर literature लिखनी है, fiction लिखना है, the amount of money that she says a woman has to have is how much? कितने pounds? 200, 300, 400, 500, 700, 800, or infinite amount of money. What does she say? She says every woman, if she wants to become a writer, in order to sustain herself while she is writing, she has to have at least how many pounds? 500 pounds. So the amount of money is 500 plus a room of one's own, as in a space, a private space where she can, organize her thoughts. Okay? Room of One's Own is a publication, 1929 publication. Okay. Next question for you people is,
The literary form of the familiar letter as a precursor to autobiographical prose is most associated with which writer's correspondence? Next question, please answer. Okay. Chalo. Familiar letter which would actually later, it was anticipating what would later become the autobiographical prose. तो इसको किसने पायनियर किया था, कौन सा वो राइटर है जिसकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस में, जिसके लेटर्स में आपको ये familiar लेटर वाली फॉर्म मिलती है? We are talking about Horace Walpole indeed. Horace Walpole की जो extensive witty letters थे that he wrote to his contemporary writers and poets, अपनी ही एज के काफी सारे writers and poets को उन्होंने ये letters लिखे थे, that will become what is called a familiar letter. ठीक है. Next question. R.K. Narayan's fictional town Malgudi functions in his novel primarily as what? R.K. Narayan, Indian author, 1930s में इनका major output आएगा, Swami and Friends, Guide, all these novels, right? ठीक है. Also the first writer, the first Indian writer to win the Sahitya Academy Award for his English novel in the year 1960. His novel Guide would win the Sahitya Academy Award, thereby becoming the first recipient of the Sahitya Academy. ठीक है, इससे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड किसी इंग्लिश नॉवल को नहीं मिला था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम. ओके. तो आर के नारायण का बचे जो मालगुडी है वो एक इमेजिन साउथ इंडियन टाउन है दैट सर्व्स एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द इंडियन सोशल सोसाइटी. प्लीज रिमेंबर साउथ इंडिया का टाउन है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज कांतापुरा is notable for its attempt to accomplish which of these? राजा राव की डेब्यू नॉवल की पब्लिकेशन ईयर इज 1938. कांतापुरा में यू हैव अचक्का, यू हैव द गॉडेस केंचम्मा, यू आल्सो हैव मूर्ति इन कांतापुरा. कांतापुरा का जो फोरवर्ड है, इट्स अ स्मॉल लिटिल फोरवर्ड विच यू आर रिक्वायर्ड टू रीड अगर आपको इंडियन लिटरेचर को समझना है. दैट फोरवर्ड, जस्ट लाइक यू हैव प्रीफेस फॉर इंग्लिश रोमांटिसिज्म, दैट फोरवर्ड इज actually essential for the entire Indian literature in English. Indian writing in English के लिए आपको forward पढ़ना ही होता है. Okay, next question. Kantapura is intimate Victorian prose style, writing entirely in a regional Indian language. Render an entire rhythm and oral storytelling sensibility with an English language. Yes, yes. Kantapura में बच्चे forward में क्या कहा था राजा राव ने exactly? That the dilemma of an Indian writer writing in English is that we have to write in a foreign language, we have to write in a language which is not one's own, a story which is which is one's own. The spirit is our own, but the language is not our own. Okay? Yeah. Next question. Arundhati Roy's God of Small Things employs which distinctive narrative technique regarding chronology? So how does she deal with the idea of time? टाइम के आइडिया के साथ कैसे डील करती है अरुंधति रॉय इन हर डेब्यू नॉवल, द फर्स्ट नॉवल कॉल्ड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 novel also was awarded the Booker Prize. Okay. क्या टाइम एक लीनियर तरीके से जैसे टाइम एक्चुअली फ्लो करता है स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी में, ऐसे ही ट्रीट किया रॉय ने? और रियल टाइम नरेशन लिमिटेड टू अ सिंगल डे, क्या पूरे जो इवेंट्स हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के वो सिंगल डे में होते हैं जैसे यूलिसेस या मिसेस जालेबी में होते हैं? Is it a purely epistolary structure, letter form का structure है? Is it a non-linear structure that moves past and present में, withholding the central tragedy until late in the novel? The correct answer is, this is your correct answer. Yes. And what is the tragedy? The death of Sophie Moore. Kamla Das's poetry in English is distinctly characterized by which of these? Kamla Das's poetry. Next question. कन्फेशनल पोइट्री है विदाउट अ डाउट, इसमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए. फ्रैंक कन्फेशनल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल सेल्फहुड, बॉडी डिजायर, सेक्सुअलिटी, एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज मुल्कराज आनंद's Untouchable is centrally concerned with critiquing what? Mulkraj Anand. Next question.
Okay. The caste system which dehumanizes untouchables is obviously pretty evident from the question. Next question. A.K. Ramanujan's poetry frequently juxtaposes personal memory with Indian cultural and mythological materials. Is that true? If yes, Ramanujan wrote exclusively in Tamil and never published poetry in English. Is that also true? If yes, is the reason a solid justification of the assertion? चलो A.K. रामानुजन की पोइट्री में एग्जैक्टली जक्सपोजिशन होती है पर्सनल की विद इंडियन कल्चरल माइथोलॉजिकल मटेरियल्स दैट इज ट्रू इंडीड तो असर्शन तो करेक्ट है बट Ramanujan is one such poet who wrote in multiple languages including English but he also wrote in multiple regional languages of India including Tamil also है ना and also he was a translator तो ऐसा नहीं है तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी रीजन इज इनकरेक्ट तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है Next question for you people is Vikram Seth's Suitable Boy is structurally notable for being written in which form? The form of writing of Suitable Boy by Vikram Seth. The second novel by Vikram Seth, because his debut novel was The Golden Gate. The Golden Gate. Right? चलो बताओ. Mm-hmm. Okay. Suitable Boy Bache is a novel which is written as a vast prose novel. How vast? It goes beyond 1,000 pages. इतनी vast है. Often compared in scope to 19th century social novels. ठीक है अगर क्वेश्चन होता विक्रम सेठ की पहली नॉवल के बारे में विच इज गोल्डन गेट के बारे में देन यू वुड हैव सेड कि वो एक वर्ड्स नॉवल थी बट द क्वेश्चन इज अबाउट द सेकंड नॉवल ठीक है द फर्स्ट नॉवल वाज अ वर्ड्स नॉवल जिसमें ऑरिजिन स्टैंडर्ड्स का यूज किया था उन्होंने ऑरिजिन स्टैंडर्ड्स 1300 पेजेस है रफली इस नॉवल में Which of the following statements about Salman Rushdie's Midnight's Children is correct? You've got three statements. 1981 publication, Midnight's Children, winner of Booker Prize, best of the Booker Prize, and Booker of the Booker Prize. Booker of Bookers. Okay. Mm-hmm. Golden House is by Salman Rushdie. Golden Gate is by Vikram Seth. ठीक है? It employs magic realism, bilkul. Its narrator is Salim Sinai. He is born at the exact hour of India's independence moment. Yes. The novel is narrated in strict chronological order without any digressions. No. In fact, our narrator is very much a digressive and unreliable narrator. Statement 3 becomes incorrect. 1 and 2 are correct, which means option number 1 is your correct answer. Very good. Next question. Nissim Ezekiel is often regarded as a foundational figure of Indian English poetry, primarily because of which of these reasons. Ezekiel was an Indian poet. He was also a playwright. He was also a Jew. He's famously known for his poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., जिसमें उन्होंने Indianized version of English को use किया था in a very light comic manner. Also, Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. So Ezekiel इतने foundational figure क्यों हैं Indian literature में? Because he rejected the use of English language for poetry. Did he not write his poetry in English? Of course he did. तो ये तो नहीं होने वाला है. Because he used strict Sanskrit prosody, sorry. No, did he? He did not. Because he focused exclusively on rural Indian themes because of his commitment to precision, irony, and a distinct urban English idiom. That is your correct answer. Option number D is your correct answer. Is it you? Shinohara Shebe's Things Fall Apart derives its title from which poem? Commonly asked question है but commonly repeated question भी है. Shinohara Shebe की publication है किस year की publication है 1950s में आएगी but specifically 1950s में किस year में? Things Fall Apart, the title borrows from a poem which says things fall apart, the center cannot hold. The lines are things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The falcon cannot hear the falconer. ठीक है ये कौन सी पोम है विलियम बटलर येट्स की पोम है दिस इज कॉल्ड द सेकंड कमिंग एंड नॉवेल पब्लिश हुई थी आपकी इन विच ईयर नॉवेल पब्लिश हुई थी इन द ईयर 19 हु सेड 1820 हियाशी 1820 में क्यों पब्लिश होगी 1958 1958 1820 किस चीज का ईयर बता रहे हो हियाशी
Things Fall Apart, Chinua Achebe, Okonkwo, Ikemefuna, 1958. Next question for you people is, Wole Soyinka, first South African writer to win the Nobel Prize, first of all, in literature. His dramatic work draws heavily on which cultural mythology or tradition? Next question, please answer. Mm-hmm. Yoruba mythology, bilkul, correct. Next question. Jean Rice's White Sargasso Sea. First of all, give me the publication year. 1960s की novel है, specifically कौन सा year है? Is best understood as a post-colonial feminist rewriting and a prequel to which existing English novel. Emily Bronte's Wuthering Heights, Mansfield Park by Austen, Robinson Crusoe by Defoe, Jane Eyre by Bronte, by Charlotte Bronte. White Sargasso Sea by Jean Rice. Jean Rice was a Dominican novelist. And Jean Rice की जो novel है comes in which year? It comes in the year 1966. Yashi, very good. 1966 की novel है, and it is a direct prequel to Jane Eyre by Charlotte Bronte. That's your correct answer. Derek Walcott's epic poem. Derek Walcott comes from what country? He's a Saint Lucian writer, है ना? Caribbean literature में हमने cover किया है इनको. His poem Omeros, जो कि एक epic poem है, reworks which classical text in Caribbean setting? ये हमने क्लास में डिस्कस किया होगा, Caribbean literature के एक क्लास में. Okay. होमर की इलियड ओडिसी की Caribbean setting की reworking है. Omeros, the epic poem by Derek Walcott. Next question, बच्चे, Derek Walcott आपके Saint Lucian writer हैं, a bunch of islands, right? Statements about Nadine Gordimer, and you need to pick the correct ones. Statements about Nadine Gordimer. Her work consistently avoids any engagement with South African politics. She received Nobel Prize in 1991. Her novels frequently explore the moral complexities of life under apartheid. Okay, next question. Nadine Gordimer, she was also a Booker Prize winning author and a Nobel Prize winning author as well. ठीक है, Booker भी है और Nobel भी है. And can you name some major works by Gordimer? याद होगा क्लास में हमने डिस्कस किए हैं. Some major novels by Gordimer. One of her novels was also banned, by the way, right? एक इनकी नॉवल है जो बैन भी हुई थी, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? First of all, her works are very, very politically engaged with the South African politics. So statement 1 तो हम outright remove कर देंगे, ठीक है? She did win the Nobel Prize and the year was exactly 1991, तो ये correct है. And her novels do talk about the life under apartheid, ये भी correct है. Some of her major novels are Booker Prize winning novel कौन सी है? The Conservationist. The Conservationist by Nadine Gordimer is a Conservationist by Nadine Gordimer is her Booker Prize winning novel. But इनकी जो famous novels हैं उनके titles बता दो. One of them was also banned. एक Burger's Daughter, and July's People. July's People and Burger's Daughter. July's People में July is the servant who protects the Smales family. Remember the Smales family that he works for? And then you have Burger's Daughter. Correct. Next question for you people is, Margaret Atwood's Handmaid's Tale is most accurately classified as which of these? Atwood, Canadian writer, world literature की questions अब आपके लिए आ रहे हैं. ठीक है, these are questions from world literature. Okay. Margaret Atwood. mm-hmm. चलो. Atwood की novel is a dystopian novel set in Gilead and it critiques patriarchal theocracy. That is indeed your correct answer. It is set in a totalitarian theocratic regime called Gilead.
एंड आपकी जो टाइट्यूलर वैसे तो बहुत सारी हैंडमेड स्टेल होती हैं इस नॉवल में, बट द मेन हैंडमेड स्टेल इज ऑफ रेड, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज पैट्रिक वाइट, द ऑस्ट्रेलियन नोबेल लॉरिएट. इनफैक्ट हम यहाँ लिख देते हैं द ओनली ऑस्ट्रेलियन नोबेल लॉरिएट. So far, there has been only one Australian writer जिन्हें नोबेल मिला है for literature. Just like there's been only one writer जिन्हें नोबेल मिला है for in India for literature, है ना? That is Rabindranath Tagore. Likewise, Patrick White is the only Australian Nobel laureate. He's best known for his novels, which explore which of these? Next question. Okay. Caribbean plantation history. Australian है ये. अमेरिकन कंज्यूमरिज्म, अरे ऑस्ट्रेलियन है ना, जापानीज सोसाइटी. तो क्वेश्चन काफी बच्चे एविडेंट है. ऑस्ट्रेलियन कीवर्ड पे खो जाएगा. सो ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप एंड द इनर ऑफन विजनरी लाइव्स ऑफ मार्जिनल एंड एसेंट्रिक कैरेक्टर्स. ठीक है. अच्छा, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जब हमने कवर किया था, वी मस्ट हैव डिस्कस्ड देयर वर टू पोएट्स जिन्होंने बुश पोएट्री लिखी थी एंड बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड द बुश बार्ड्स. कौन से वो दो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन पोएट्स थे हु आर नोन एज द बुश बार्ड्स? अमेरिकन लैंडस्केप के बारे में, द बुश के बारे में. There were two American poets. Both of them are called the fathers of, you know, bush poetry और bush bard को हम कहते हैं. कौन थे वो दोनों? Happy Valley is Patrick White's first novel. Very good. ठीक है. There was Banjo Paterson. श्रीता, very good. There was Banjo Paterson. और दूसरे कौन थे? अगर नोट्स रिवाइज किए हैं तो ये याद होगा. There was Banjo Paterson and the other one was, एक और है. नोट्स ही हमने रिवाइज नहीं किया मैम. वॉस किस बारे में है? वॉस इज अबाउट एन एक्सप्लोरर, एक रियल लाइफ एक्सप्लोरर के बारे में ये नॉवल थी कॉल्ड वॉस. ठीक है. एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द सेकंड नेम एंड आई डू नॉट हैव द सेकंड नेम येट. नो, व्हाई वुड ऊडकरो नुरकल कम हियर? अरे बुश पोएट्री की बात हो रही है. बैंजो पेटरसन एंड हु इज द सेकंड पोएट? तुम लोग क्लास के नोट्स रिवाइज करके नहीं आए हो, बिकॉज हो ही नहीं सकता क्लास के नोट्स रिवाइज किए और सेकंड नाम आप रिकॉल ना कर पाए. Concept of writing back in post-colonial literary theory primarily refers to which of these? Next question. चलो बता दो quickly. The concept of writing back in post-colonial literary theory refers to what? When you write back, when a writer from a colonized country writes back, they're basically resisting against the colonial legacy. है ना? Henry Lawson, very good. Who said that? Whoever said that, very good. Henry Lawson and Banjo Paterson, both of these are the bush poets or the bush bards of Australian literature. अब आंसर क्या हो जाएगा? Post colonial writers revising or subverting colonial writings and discourses from a colonized perspective. पहला ही आंसर करेक्ट है, so this is your correct answer. Writing back क्या है बच्चे? राइटिंग के थ्रू यानी डिस्कोर्स के थ्रू रेजिस्ट करना colonial legacy को, that is writing back. That's your correct answer. Next question for you people is, yeah, Bill Ashcroft, Gareth Griffin, Helen Tiffin, Empire Writes Back में writing back का idea आता है. Nathaniel Hawthorne Scarlet Letter का publication year बताओ पहले. Is most centrally concerned with the themes of which of these? Nathaniel Hawthorne, the writer who was born in Salem. यहाँ पर Salem witch trials हुई थी, but at a later time he was also born in the town of Salem. Hawthorne has been associated with dark romanticism. You know, as a novelist, he's known for Scarlet Letter, but he's also more importantly known for his short stories. Yeah, short stories like Rappaccini's Daughter and Birthmark and you know, some such short stories. And Young Goodman Brown also. Yeah. Okay. The answer is sin, guilt, Puritan society, hypocrisy, and also adultery. But publication year of this novel is 1850. Remember, 1850 saw the publication of Scarlet Letter, and 1851 saw the publication of Moby Dick by Herman Melville. दोनों American classic novels हैं, तो दोनों को consecutive years में याद कर लो. Okay, next question. Walt Whitman's Leaves of Grass, again American work of poetry, highly controversial work of poetry, by the way. Obscene work. At least it was labeled as obscene.
is notable for its innovative use of which poetic form? तो वॉल्ट विटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स ने इनमें से पोएटिक कौन सी पोएटिक फॉर्म का यूज किया था? द फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन द फादर ऑफ फ्री वर्स, बताओ. फ्री, अच्छा यहाँ पे लिखा ही है फ्री वर्स, तो आंसर फिर फ्री वर्स ही होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज हर्मन मेलविल्स मूवी डेक. अब इसका पब्लिकेशन ईयर 1851 है. इट एम्प्लॉयज विच नैरेटिव वॉइस? हर्मन मेलविल, मूवी डेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Epistolary novel with multiple narrators, detached third-person omniscient narration, Ishmael the first-person narrator, survivor of Pickford's voyage. Obviously, correct answer यही है. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Tell me the publication year of Great Gatsby before you answer the question. Great Gatsby was published in which year? It critiques the American dream, does it? The novel is narrated by Nick Carraway, a Yale-educated Midwesterner who moves to Long Island and becomes a neighbor of J. Gatsby. Okay. F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby. Publication year is Ashmita. I will. We still have time. Don't worry. In fact, Ashmita, at 7 p.m. शाम को I am going to meet you people, not to teach, not to study, but just to talk. ठीक है. By the way, let me remind you students, आज का आपका 7 p.m. की जो, let's not call it a class first of all. ठीक है. जो आपकी current class चल रही है, इसी के description box में, if you scroll down, आपके पास free live class का link आएगा. Click on that link. Once you click on that link, आपके पास ये विजिबल हो जाएगा. ठीक है. दिस इज योर इंग्लिश क्लास टिप्स ट्रिक्स एंड अ गुड लक मैसेज. ठीक है. सो आई विल जस्ट टॉक टू यू. कोई टीचिंग नहीं होगी, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. आई प्रॉमिस. राइट. लेट्स नॉट बर्डन आवरसेल्व्स एट द लास्ट मोमेंट. शाम को 7 बजे वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर ऑन द ऐप. इट्स अ फ्री क्लास. लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ टिप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है. I know some of you also missed your net and JRFs in the last cycle by very close, by like margins of 2 to 3 questions. तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ टिप्स होंगे हाउ टू मेक श्योर कि इस बार आप वो 2-3 क्वेश्चन जो मिस कर आ गए थे वो आप मिस नहीं करेंगे. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फिट्जजेरल्ड की 1925 की नॉवल है. इंडीड अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिक करती है. रीजन असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी आपका बच्चे करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता. So both of them are correct, but reason is not a reason for assertion. Done? Okay. Chalo. Next question for you people is, which of the following American writers is most closely associated with American transcendentalism movement? You have Sinclair Lewis, Stephen Crane, Ralph Waldo Emerson, and Theodore Dreiser. Also, you need to tell me the first American writer to win the Nobel Prize. ठीक है. ये भी बता दो साथ में. First of all, answer this question. उसके बाद डिस्कस करते हैं. ट्रांसेंडेंटलिज्म, एमर्सन, थोरू ऑप्शंस में है नहीं, तो एमर्सन होंगे. एमर्सन रोट हिज फेमस ऐसे कॉल्ड नेचर, सेल्फ रिलायंस, नेचर, है ना. दैट्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है. फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. इनका नाम भी बता दो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या नाम था? First American writer to win the Nobel Prize for Literature. Who are we talking about? We are indeed talking about Sinclair Lewis. First American woman writer to win the Pulitzer Prize. First American woman writer to win Pulitzer for novels, for fiction. Name her and name her novel as well. You need to name her novel as well. Sinclair Lewis, ठीक है, 1930 में he won the Nobel, thereby becoming the first writer to win the Nobel. That's correct.
Edith Wharton was the first American woman. हाँ बिल्कुल. Edith Wharton को बच्चे अवार्ड मिला था, पुलिट्जर मिला था for her novel Age of Innocence, The Age of Innocence. ठीक है, अगर नॉवल का नाम पूछ लिया जाता है, The Age of Innocence is the correct answer. Cool. Next question. Toni Morrison, Ernest Hemingway, Eugene O'Neill. They share what distinction? Oh, good question. What is that one thing which is common to all three writers? Toni Morrison, Hemingway, and Eugene O'Neill. All of them wrote exclusively about the American South. जैसे फॉकनर भी American South के बारे में लिखते थे. Specifically about American South. All of them wrote primarily, they wrote poetry. All of them were born outside United States, but all of them were United States. They were American writers, but they were born outside US. Three of them. All American writers are also Nobel laureates. Are all of them American writers and all of them are also Nobel laureates? बिल्कुल. सारे अमेरिकन हैं, सारे नोबेल विनर्स हैं. सो टोनी मॉरिसन फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर टू विन द नोबेल, बट अमेरिकन तो हैं ही. अर्नेस्ट हेमिंगवे नोबेल विनर हैं, एंड यूजीन ओनील भी नोबेल विनर हैं. इनफैक्ट यूजीन ओनील इज ऑल्सो 4 times winner of Pulitzer, plus he's won the Nobel as well. He's the writer of Harry A. तो मॉरिसन को नोबेल मिला था 1993 में, हेमिंगवे को 1954 में, एंड यूजीन ओनील was awarded Nobel in 1936. You need to read these statements about Death of a Salesman, which is a play by Arthur Miller, the American playwright, and tell me which of these statements are correct. Death of a Salesman, Arthur Miller, the writer of Crucible as well. Arthur Miller. ठीक है. Arthur Miller. The play ultimately affirms the American dream as fully attainable through hard work alone. No, bache. Willie Loman, by the end of the play, he's gonna die, and he's gonna die a very tragic death. He's gonna die trying to become successful, but he will ultimately fail. है ना? So Willie Loman की death में we also see the death of American dream. We realize that American dream is nothing but an illusion. है ना? So by that logic, आपका first statement गलत है. It employs flashback memory sequences. हाँ, विली लोमैन के बहुत सारे memory sequences होते हैं. He goes back in past. He thinks about his past affairs also. Remember, he has an affair with a woman, and his son finds out. So that's correct. In fact, इनकी memories के through his brother also keeps showing up. So second statement correct है. Willie Loman dies without ever achieving the success of recognition that he had been pursuing throughout. ये correct है. तो 2 and 3 are correct. First wrong है. 2 and 3 मतलब option number B correct. Done? Yeah. It also shows the futility of the American dream. True. Next question for you people is, Emily Dickinson's poetry is characterized particularly by which of these? American poetess Emily Dickinson, she barely published 12 poems during her lifetime. Less than a dozen poems were published during her lifetime. Remaining, जब इनकी death हो जाती है, posthumously, about 1800 poems were discovered by her. She was known for her very... अच्छा, यही तो question है, so I can't tell you that. ठीक है. I could not stop for death, so death stopped for me. है ना? The answer is, इनके works में सबसे पहले इनकी poems के titles नहीं होते. No titles at all. Random numbers have been assigned to her poems. There are no titles to her poems. Just like Shakespeare did not give titles to his sonnets. Secondly, her poems do not use complete rhyme or full rhyme. They use slant rhyme or half rhyme. Thirdly, her poems do not use the conventional punctuation. Her poems do not make use of the conventional rules of capitalization. And she uses the dashes also. So slant rhyme का use है, unconventional capitalization का use है, compressed and often nomic expression है. That's correct. बिल्कुल. ठीक है. Next question for you people is, Harlem Renaissance of 1920s is best described as which of these? Harlem Renaissance of 1920s is best described as which of these? Negritude, Harlem Renaissance, इस पे काफी questions आ जाते हैं हर बार. ठीक है? Let me just also show you something जो मैंने आपको भी टेलीग्राम में एक चार्ट भेजा था.
है ना? If you remember, I sent you a chart on Telegram. It was a revision chart. So I think I also sent you a revision chart for Harlem Renaissance. Did I? बताओ बताओ एक बार confirm कर दो quickly. Did I also send you a revision chart for Harlem Renaissance? बिल्कुल अभी शेयर किया था. नहीं? चलो देख लेते हैं. Okay. Okay. ठीक है. So by the way students, अगर आपने Telegram channel join नहीं किया है, this is the Telegram channel. It's called English Literature by Ayesha Mam. This is where you get all the classes, their study notes, their materials and all the updates. सब कुछ आपको यहीं पर मिलती हैं. अब इसी चैनल में मैं आपको कभी-कभी quizzes भी दे देती हूँ, and I also shared the the quick charts with you people. Only if this opens will we be able to see. और ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर दिस इज द हार्लेम रेनेसांस चार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था. तो इसको ध्यान से एक बार देख लो. हार्लेम रेनेसांस अ न्यू निग्रो अवेकन्स, राइट. ये चार्ट है. इसमें जितने भी मेजर फिगर्स थे हार्लेम रेनेसांस के, ऑल ऑफ देम आर लिस्टेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी चार्ट्स मैंने आपको शेयर किए हैं क्विक रिवीजन के लिए, उन सबको गो थ्रू कर लेना. यहाँ पर आपके क्लॉड मैके, लैंगस्टन ह्यूम्स, ज़ोरा नील हर्स्टन सब लिस्टेड हैं. ठीक है, सब लिस्टेड है. सो हार्लेम रेनेसांस 1920s का मूवमेंट है. बिल्कुल हाँ, 1920s का मूवमेंट है. इट वाज अ मूवमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल एंड आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग centered in the New York. Done. Next question. In Aristotle's Poetics, the concept of catharsis refers to what? Aristotle की poetics में catharsis is the ultimate goal of tragedy. है ना? That's what he said. Just like Bharat Muni ने कहा था नाट्य शास्त्र में that the ultimate goal of any play has to be the production of rus, essence, aesthetic juice. Likewise, Aristotle ने कहा था in his poetics that the concept of catharsis is the ultimate goal of a tragedy. And catharsis क्या होता है? Purgation. Purgation क्या होता है? The removal, the cleansing of bad emotions. And what are the bad emotions? Pity and fear. So pity and fear which is experienced by audience when they watch a tragic play. तो उस pity and fear का जो removal है, cleansing है, वो essential है, and that ultimately refines and makes humans better, and that's the ultimate goal of tragedy. Next question, the ultimate goal of catharsis. Sydney's apology for poetry. बच्चे now onwards आपके पास questions हैं literary criticism के. Sydney's apology for poetry defends poetry primarily against which charge? Philip Sidney. The work was completed much earlier, 1789, 1790 के अराउंड ये वर्क कंप्लीट हो गया था. इनफैक्ट इससे भी पहले हो गया था. पब्लिश कब हुआ था? 1795 में. पॉस्ट्यूमस पब्लिकेशन है. सिडनी पास्ट अवे, उसके बाद ये पब्लिश हुआ. ओके. ठीक है. Philip Sidney apology for poetry defends poetry against the charge that it is too difficult to understand, that it is a frivolous and morally corrupting form of lying, as had been argued by Puritan critic Stephen Gossin in School of Abuse. Yes, that's your correct answer. Stephen Gossin को respond किया था Philip Sidney ने और एक famous university wit ने. Who was that university wit who also responded to Gossin's attack on poetry? Yes, the most famous attack comes from Philip Sidney. But there's another attack. हमने डिस्कस किया है बच्चे ये भी क्लास में. स्टीफन गॉसन ने क्या कहा था? that poetry is the mother of lies. गॉसन का कहना था poetry is the mother of lies. So technically Gossen's team seems to be echoing the same idea जो originally Plato ने कहा था, that poetry is all lies. Poetry is false and all poets are liars. So poetry is the mother of lies. That's what Gossin said. एंड सिडनी ने डिफेंड कर दिया. ऑल्सो थॉमस, किसने डिफेंड किया था साथ में? थॉमस लॉज ने भी डिफेंस लिखा था इसका. ठीक है, थॉमस लॉज ने भी रिस्पॉन्ड किया था. इनफैक्ट थॉमस लॉज का जो डिफेंस है वो इमीडिएट था. सिडनी का तो काफी बाद में पब्लिश हुआ. राइट, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dryden's essay on dramatic poesy is structured as what? Also give me the year. Give me the publication year. An essay on dramatic poesy by John Dryden, the first poet laureate, appears in which year? And then tell me what is the structure of this essay. I know it's called an essay,
बट इट्स नॉट टिपिकल ऐसे. कन्वेंशनल सेंस में जो प्रोज ऐसेज होते हैं वो ऐसे ये नहीं है. So what is the form? What's the form? Okay. It is structured in form of a dialogue between four people. These are four fictional people. You've got Crite, you've got Eugenius, you've got Lycidius, and you've got Neander. Neander, who's the spokesperson, who's the mouthpiece of Dryden himself. Crites का मतलब होता है judgment or to judge, and Crites represents or he stands for he champions the ancient plays or the ancient dramas, right? तो यहाँ पर दो मेजर डिबेट्स होती हैं, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न्स, एज इन हु वर द बेटर प्लेराइट्स, द एंशियंट राइटर्स और द मॉडर्न राइटर्स. Another debate is French versus English. Are French playwrights better or the English playwrights are better? So yeah, the year it is the same year when Dryden became the poet laureate. It was the year 1668. Essay on dramatic poesy came out the year he also became the poet laureate of England, thereby becoming the first poet laureate. Next question. Arnold's critical concept of touchstone refers to what? Matthew Arnold, Victorian age poet and critic. तो आर्नेल का टचस्टोन का जो आइडिया उन्होंने प्रपोज किया था इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट वाज दैट आइडिया? व्हाट वाज दैट आइडिया? क्विकली. Arnold said कि look, if you've got to compare the poetry of today's poets, I'll give you something to compare it to. In order to find out the literary merit, how will you find out the literary merit? To compare it to the writing of great masters. And do you need to compare the entire work of great masters? No, you can literally pick a passage or even a line from the great masters, and then you can compare today's poets to those poets and see if the poetry of today will actually hold any merit at all. Okay? So that method of touchstone, basically goal की purity को test करने के लिए method होता है, but this comparative analysis का method can be applied to literature as well. This was Matthew Arnold using passages from acknowledged poets. The term जो उन्होंने use किया था acknowledged poets के लिए, he called them great masters. Great masters. हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया है कि great masters कौन कौन है. कुछ ancients हैं, कुछ modern writers हैं. Questions आ जाते हैं, which of these are great masters according to Arnold. ठीक है. Next question. I. Richards' distinction between emotive and referential uses emotive और इसको poetic भी कह सकते हैं, right? He says language के दो use हैं, emotive use and scientific use, और poetic use or referential use of language is most central to which critical approach? Next question. Scientific truth is the truth of commonly used language, non-poetic language, non-literary language. Poetic language का जो truth है वो emotive truth है. Scientific language, जो scientific function है language का, वो क्या करता है? It conveys an idea, information को convey करने के लिए use होता है. However, emotive truth use होता है, emotive idea, emotive function use होता है only to convey an emotion, not an information, not a piece of information. Only to evoke an emotion. ठीक है? तो मतलब साइंटिफिक का जो यूज, प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज है वो साइंटिफिक है, और जो पोएटिक यूज है वो इमोटिव है. आंसर क्या आ जाएगा? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, 1929. ही इज एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑल्सो. इन्होंने अपने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स पर. Thomas Stern Eliot का tradition and individual talent argues that romantic notions of poetic personality. Argues against romantic notions of poetic personality. Eliot proposes impersonal theory of poetry, wherein he says the poet's mind serves as a catalyst that transforms experience without directly expressing personal emotion. Did Thomas Stern Eliot say कि poet को अपनी poetry से a poet has to make sure to maintain some objective distance from his poetry? Did he say that? Yes, indeed. He said objective distance होना चाहिए आर्ट और आर्टिस्ट के बीच में, यानी पोएट एंड पोएट्री के बीच में, सो दैट पोएट की पर्सनालिटी एंड पोएट के अपने ओपिनियंस एंड फीलिंग्स पोएट्री पर रिफ्लेक्ट नहीं हो, राइट? एंड दिस थियरी इज कॉल्ड द थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. तो आइडिया बिल्कुल करेक्ट है. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, एंड आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 को जस्टिफाई भी करता है. अब इसका ऑप्शन नंबर डी क्यों आंसर दिया सबने, मुझे ये बताओ. ठीक है, अश्मिता ने तो चलो 1 कहा है, ठीक है, ओके. श्रेया सेड डी. श्रेया एक बार जस्टिफाई कर दो, बिकॉज लेट मी क्लियर योर डाउट. अगर डाउट है तो क्लियर कर देती हूँ. स्वास्तिक ने कहा बी. स्वास्तिक क्या लॉजिक है?
It's okay, I'm just asking you because I want to clarify your doubt, students. Okay, listen again, let's just go through the first statement again. Everybody agrees that the second statement is correct? उस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है. Theory of impersonality, ठीक है, let the poet not reflect his personality onto the work of art that he is creating. Clear है, वो तो correct है. And poet का mind is like a catalyst, जैसे chemical process में catalyst क्या करता है, उस chemical process को enable करता है, complete करने में help करता है, but comes out unaffected. Likewise, a poet's mind is supposed to enable the process of creation but come out unaffected. ये तो करेक्ट है. एलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इंडीड आर्ग्यू किया था अगेंस्ट द रोमांटिक नोशंस ऑफ पोएटिक पर्सनालिटी. बच्चे रोमांटिक नोशंस क्या है पोएटिक पर्सनालिटी की? कि पोएट अपनी इमोशंस के थ्रू पोएट्री क्रिएट करता है. व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ से? दैट इमोशंस अल्टीमेटली स्पॉन्टेनियस इमोशंस की वजह से पोएट्री क्रिएट होती है. किसके इमोशंस? पोएट के. तो इस वाली नोशन के अगेंस्ट ही तो है ऐसे थॉमस टर्न एलियट का. तो ठीक तो है ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है. या F.R. Lewis's concept of great tradition, publication year of great tradition, first of all. Before you answer the question, give me the publication year of great tradition. So he says these are the English novelists that can be considered a part of the great tradition of novel writing. Name those novelists also, but you're going to give me the publication year first. Quickly. Okay. Very, very quickly. 1948. Yashi, very good. 1948 पब्लिकेशन ईयर है ग्रेट ट्रेडिशन का. और इन्होंने कहा था ग्रेट ट्रेडिशन में आई एम गोना इंक्लूड 4 राइटर्स. 2 of them will be women writers, 2 male writers. We've got Jane Austen, George Eliot, Henry James, Joseph Conrad, D.H. Lawrence being their potential heir. And he said, I am going to disqualify Dickens. Dickens is not in the race of the great novelists. That's your correct answer. Next question. See, he very controversially excluded Dickens, although we consider Dickens one of the greatest novelists ever. Okay. Which of these statements regarding William Wordsworth and S.T. Coleridge's critical positions are or is correct? चलो. Romantic critics हैं दोनों. Okay, please answer. Mm-hmm. Yep, indeed. The answer is 1 and 2 only. Wordsworth argued for poetic diction to be drawn on the language actually used by ordinary men. Correct है. Coleridge and Biographia Literaria 1817 work उन्होंने fancy और imagination की distinction दी थी. Correct है. Did both the critics reject the value of meter? No. One of them valued the meter, the other one did not. So that is yours. Option number 3 is incorrect. ठीक है. चलिए. New critical practice of close reading is fundamentally premised on what idea? Next question, please answer. ठीक है. I'm gonna sit for a while. Please keep answering. Mm-hmm. चलो करो आंसर. We are back. क्लोज रीडिंग की टेक्निक एग्जैक्टली है क्या? क्लोज रीडिंग की टेक्निक ये है दैट अ टेक्स्ट इज अ self contained object. In order to understand the meaning of a text, you do not need to go beyond the text because text क्या है? Autotelic है, self sufficient है, self contained है, autonomous object है, independent है of external elements like biographical elements, historical elements. तो सारा का सारा मीनिंग कहाँ मिलेगा? इन द टेक्स्ट इटसेल्फ. दैट इज क्लोज रीडिंग पर जो टेक्स्ट की मीनिंग मिल जाएगा. न्यू क्रिटिक्स का कहना था. North of Fry, he was Canadian by the way. Anatomy of Criticism proposes a theory of literature organized primarily around what? North of Fry. Linguistic structuralism, strict Marxism, psychoanalysis, archetypal. Fry was Canadian, remember? North of Fry and J.G. Fraser. दोनों important हैं.
चलो एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली बच्चे आर्किटाइपल वर्क्स का ही तो आइडिया है, आर्किटाइपल पैटर्न्स का भी कुछ पैटर्न्स हैं जो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो किसी भी कल्चर में किसी भी टाइम में एग्जिस्ट करते थे विद माइनर वेरिएशंस, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कुछ सिंबल्स हैं जो यूनिवर्सल हैं एंड लेट्स कॉल दीज सिंबल्स आर्कीटाइप्स। तो नॉर्थ ऑफ फ्राई ने क्या किया था, इन रेकरिंग मिथ्स एंड आर्कीटाइप्स को स्टडी किया था। दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज क्लिंथ ब्रूक्स इन द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कल डिस्कस किया था, वेल राउट ऑन 1947 की बुक है, वेल राउट ऑन is a 1947 book. It contains a total of 11 chapters. The first chapter is the the language of paradox. Chapter 1 क्या है, title क्या है, the language of paradox, ठीक है, and last chapter क्या है of this chapter 11 is called the heresy of paraphrase. तो heresy of paraphrase का core idea क्या है कि the act of paraphrasing is heretical. Basically अगर आप किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को पैराफ्रेज करते हो, यू ओनली कैरी फॉरवर्ड द मीनिंग ऑफ इट बट यू लीव बिहाइंड द फॉर्म, तो आप फॉर्म एंड कंटेंट को सेपरेट कर लेते हो। सो अगर एक न्यू क्रिटिक ये कहेंगे, obviously a new critic is not going to agree with the idea that form and content should be separated because बच्चे formalism का जो central idea वो ये है that form and content cannot be separated। उस हिसाब से तो उनके लिए paraphrase एक heretical act हो ही गया। So a poem's meaning is inseparable from its precise verbal structure, so paraphrasing necessarily distorts and loses it. For example, अगर मैं कहती हूँ आप एक poem को summarize करके लाओ, अब क्या करोगे, उस पोम का जो मीनिंग है, जो जिस्ट है, वो मुझे बता दोगे, लेकिन जो पोम की ब्यूटी है, फॉर्म है, स्टाइल है, यूज ऑफ मेटाफर्स एंड ऑल दैट है, वो तो रह जाएगा। तो बेसिकली व्हेन यू पैराफ्रेज और व्हेन यू समराइज अ पोम बच्चे, आप उसका मीनिंग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, फॉर्म रह जाती है। सो कंटेंट एंड फॉर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। So sure, structural linguistics distinguishes between which two key critical central which critical terms। अच्छा ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सच होगी कौन से दो क्रिटिकल टर्म्स हैं? ऑथर रीडर तो देखो कॉमन टर्म्स हैं, किसी के स्पेसिफिकली है नहीं। मेटाफोर मेटोनिमी रोमा जैकॉब्सन के हैं, द रशियन लिंग्विस्ट जैकॉब्सन। द स्टडी ऑफ एफेसिया वाज डन बाय रोमा जैकॉब्सन, ठीक है, ही कम्स अंडर प्राग लिंग्विस्टिक स्कूल, आल्सो मॉस्को लिंग्विस्टिक स्कूल एज वेल। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। सिग्निफायर सिग्निफाइड, तो शॉ ने कहा था कि एक लिंग्विस्टिक साइन एक डुअल एंटिटी है। डुअल एंटिटी मतलब इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, देयर इज अ सिग्निफायर एंड देयर इज अ सिग्निफायर एंड देयर इज अ सिग्निफायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोलैंड बार्थेस ऐसे डेथ ऑफ द ऑथर 1967 का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। रोलैंड बार्थेस 1967। quickly last few questions left और एंड में जाके एक प्रोज का पैसेज आएगा। इट्स अ स्लाइटली लॉन्गर पैसेज बट आई विल गिव यू इनफ टाइम, ठीक है, उस पैसेज को पढ़ना। इट्स अ पैसेज अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियोरी, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना वो एस्टैब्लिश करता है वो पैसेज। तो उसके बाद वी विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज, ठीक है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट। रोलैंड बार्थेस का डेथ ऑफ द ऑथर 1967 का ऐसे कहता है that meaning is generated not in the author but in the reader, ठीक है, meaning, the site of meaning is not the author, so the authority of the author as the godlike presence needs to die away, needs to fade out in order for the birth of the reader to happen. So death of the author is your correct answer. Next question, Jacques Derrida's concept of deconstruction centrally involves which of these? Jacques Derrida, the father of deconstruction. Okay. जैक्स डेरिडा का कोर आइडिया या डिकंस्ट्रक्शन का कोर आइडिया फॉर दैट मैटर क्या है, दैट टेक्स्ट क्या करते हैं, अपने ही फाइनल मीनिंग को अंडरमाइन करते हैं। टेक्स्ट जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, ठीक है, तो यू कैन नेवर अराइव एट अ फाइनल मीनिंग। और डिकंस्ट्रक्शन क्या करता है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ब्रॉडली क्या करता है,
It questions the stability of the binary oppositions, the same binary oppositions which were believed to be stable by the structuralists. In fact, the structuralists said that meaning is given to any signifier or signified because they are a part of a binary opposition. So they believe binary oppositions were very much stable. However, इन्हीं binary oppositions को destabilize कर contradictions निकाल कर ये prove करना that meaning is not something you can finally arrive at. That is the task of deconstruction or broadly post-structuralism. Next question. Michel Foucault's concept of author function. Author function का Michel Foucault का concept कहाँ आता है? In his 1968 essay titled What is an Author? Titled What is an Author? 1967 Death of the Author, Roland Barthes. 1968 next year What is an Author by Michel Foucault. तो फुको का इसमें ऑथर फंक्शन का आइडिया क्या है? फुको's आइडिया ऑफ ऑथर फंक्शन. Foucault said the figure of the author is a discursive construct. देखो फुको के लिए everything is a discursive construct because we said the figure of the author itself is a discursive construct that regulates and limits the proliferation of textual meaning. Right? ठीक है, चलिए. Next question. Judith Butler's theory of gender performativity rejects gender as stable essential identity. Does it? Butler argues that gender is constituted through repeated, stylized bodily acts and discourses, rather than being a pre-existing essence that those acts merely express. Reason भी correct लग रहा है, assertion भी correct लग रही है. What do you say? है ना? Both of them seem equally correct, and it seems like reason is very valid to justify or to support the assertion. So assertion or reason दोनों correct हैं, and reason is indeed the correct expression of assertion. That's the correct answer. Edward Said's Orientalism critically examines which of these. अभी हम क्या बात कर रहे थे? फुको ने कहा था that dash is a discursive construct. किसकी बात कर रहे थे फुको? फुको कह रहे थे author का जो idea है that is a discursive construct. Likewise, another discursive construct, another discourse enabled construct is the image of the Orient formed by the Western scholar. So that is Edward Said 1978 का work है which is called Orientalism. Western discourse historically constructed the idea of the Orient. The actual East and the idea of the East as constructed by them are two different things altogether. They exoticized the East. They made the East seem inferior in order to justify colonial domination. That's your correct answer. Because once the Western scholar could actually justify that the East is inferior, they could also justify why they need to colonize the East in order to civilize it and make it better than they already are. Next question. Gayatri Chakrabarti Spivak's essay, it's a 1988 essay, Can the Subaltern Speak? What is the central idea raised in this essay? The central question raised in this essay. Last few questions left. 90 questions done. हाँ, we left with 10 more questions. उसमें से 5 questions general होने वाले हैं, 5 questions close passage वाले. ठीक है, तो आपका 100 questions का set हो जाएगा paper 2 का. Can the subaltern speak में central idea ये है, since the subaltern is so powerless, they have been deprived of a voice. Do they have the agency to express their own problems? ठीक है, can they even speak? Right? So whether subaltern groups can voice their own experiences independently of dominant discourse frameworks that risk speaking for them. Because when you speak on somebody's behalf, you also ultimately deprive them of a voice of their own. Next question. Which of the following statements about Fumike Bhabha's concept of hybridity is correct? You've got 3 statements. Please look at them and tell me. Fumike Bhabha, post-colonial theorist, hybridity concept के बारे में कौन सी 3 statements correct? क्या तीनों करेक्ट हैं? It describes the cultural mixing produced in colonial, post-colonial contact zones. Cultural mixing, ठीक है.
It is primarily a term borrowed unchanged from 19th century biological race sciences, hybrid race science का term है. It rejects the notion of a pure, uncontaminated return to pre-colonial culture. Did Bhabha say that once a country has been colonized, all the people in that country, they can never go back to a complete, uncontaminated, unaffected pre-colonial culture, which is very true. Can India, after the British colonization, could India go back to being a normal country? I mean, not a normal country, but could India go back to being the same country that it was before the Britishers arrived? No, of course not. Right? तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. होमी के भाभा, हाइब्रिडिटी. ठीक है, होमी के भाभा. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, in Marxist literary theory, the concept of base and superstructure, basic idea है Marxism का, describes the relationship between what and what. Plot and subplot, economic mode and ideological form, signifiers and referent and author and reader. Classical Marxism says base determines superstructure. जो simplistic idea है Marxism का, it says base determines superstructure. Base क्या है? Essentially the economic base. Relations of production, means of production, वो सब कुछ आपका base में आता है. Base is ideally economic and superstructure is ideological. ठीक है, तो जितने भी आपकी आइडियोलॉजी के कंस्ट्रक्ट्स हैं, लॉ, रिलीजन, स्कूल, लिटरेचर, आर्ट, वो सब कुछ कहाँ आएगा? सुपरस्ट्रक्चर में. तो क्लासिक आइडिया कहता है कि बेस के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर क्या करता है? स्टैंड करता है, एंड यही इकोनॉमिक बेस सुपरस्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है. So that's your correct answer. The economic mode or the base determines these cultural ideological forms, including literature. Literature superstructure का part है. Next question. Stanley Fish, American reader response critic, his concept of interpretive communities is, oh, I just gave away the answer. So yeah, Stanley Fish, interpretive communities is most closely associated with which critical school? The critical school is reader response theory. Done. Julia Kristeva's psychoanalytic feminist concept of abject refers to what? Good question. Kristeva's abject refers to what? Hurry up, last 6 to 7 questions left. That's it. That is it. कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के भी हैं, बिकॉज हमने लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं किए थे ना, so we'll have a few questions from language unit also. ठीक है. Yeah, Kristeva's idea is that which is radically excluded provokes horror, disgust, and it disturbs the boundary between the self and the other, object and the subject के बीच की जो boundary disturb कर दे, that is absent. Next question. In Saussurian linguistics, Lang and Parole के बीच का connection या relation क्या है? Easy question. Saussurian concepts are asked in almost every cycle, right? अगर इस बार नहीं आते, it would be perhaps the first time. Otherwise, Saussurian concepts आते ही आते हैं. Synchronic, diachronic, syntagmatic, paradigmatic, Lang, Parole, signifier, signified, everything is important. तो सशौर के आइडियाज को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे. कोर आइडियाज हैं, बेसिक आइडियाज हैं, there's nothing difficult there. Lang क्या है? Lang refers to only that which is the written part of language, and parole refers to the spoken part of language. No, they are synonymous terms. Nah. Lang is individual speech and parole is the abstract language system. No. Language is the abstract systemic system. जितने भी rules हैं grammar वगैरह की conventions वो language की वो lang में आएंगी. Parole is the utterance, is the individual utterance. ठीक है, concrete utterances हैं. Option number D is your correct answer. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. नोम चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. अब बच्चे आपके पास लैंग्वेज यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन हैं. ठीक है, यूनिट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन हैं, देन पक्का पक्का वील मूव टू द प्रोज पैसेज. ओके. Chomsky's theory of universal grammar proposes which of these? Proposes which of these? Next question. Chomsky's theory of universal grammar proposes which of these? Did Chomsky say all languages are learned purely through environmental imitation? No, ये तो non
की an idea है contrary to Chomsky's idea of innateness hypothesis. Incorrect है. Grammar rules vary so completely that no universal principles exist. No. He said different languages may be जो एक common चीज है which is universal to all of us, which enables all of us to produce languages, universal grammar. Humans possess an innate, yes, pre-given, biologically endowed linguistic faculty underlying the capacity to acquire any human language. Correct. That is indeed universal generative grammar. ठीक है कि humans अपनी language को generate कैसे कर पाते हैं due to a universal grammar possessed by all humans irrespective of the language that they speak, and that is universal in generative grammar. Okay. The branch of linguistics that is concerned with the study of speech sounds as physical acoustics phenomena without regards to meaning. Please note, options में you have phonology as well as phonetics. दोनों options में हैं, and I've told you very, very explicitly that speech sound की study in the abstract form is called something. Speech sound की study as it is actually uttered. Speech sound in your mind when studied. क्या स्टडी किया था हमने स्टडी किया था साउंड इन माइंड. ठीक है, मतलब साउंड जब अपनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, उसकी स्टडी को वी हैव अ नेम फॉर दैट. साउंड इन ऑन टंग, साउंड इन योर माउथ और साउंड इन योर टंग, ऑन योर टंग. ठीक है, द एक्चुअल यूज ऑफ साउंड, ये क्या होता है? The actual production of sound, the articulation of sound, that is phonetics. उसकी study को phonetics कहते हैं. And the study of the abstract sound in the mind, that is called your phonology. That is called phonology. तो आंसर क्या हो जाएगा? Phonetics is your correct answer. Yes. ठीक है. In language pedagogy, the communicative language teaching (CLT) approach primarily emphasizes which of these? Communicative language teaching. नाम से evident है. There's an emphasis, there's a focus on the communicative aspect of language, not the written aspect of language. चलो बताओ. Exclusive use of learners' first language in instruction, meaningful communication and functional use of over isolated grammar accuracy drills. Yes. बच्चे जो conventionally language आपको सिखाई जाती है in schools is focused more on the grammar rules and on vocabulary. You have to learn the words of vocabulary and you're also supposed to understand or at least memorize the rules of grammar. Tenses के rules को आपको learn करना पड़ता था. That was grammar translation method. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू जब आप लैंग्वेज सीखते हो, यू आर एबल टू मास्टर द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, नॉट द स्पोकन फॉर्म. स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए यू टू रिलाई ऑन व्हाट इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Code switching among bilingual speakers is generally considered as a sign of incomplete language acquisition. Code switching typically reflects socio-linguistic competence, allowing speakers to navigate social context, identity, and register. Code switching क्या होता है? When I speak, what I do is I speak थोड़ा हिंदी में, थोड़ा English में. Exactly what I did right now, right? So when you switch between two languages, code switching among bilingual speakers. We are bilingual speakers. I'm a bilingual speaker. I speak Hindi, I speak English. So I keep going back and forth between Hindi and English. So the reason I switch codes is because I do not have complete language acquisition of one language. No, that is not the case. The case is कि जब आप दो languages के बीच में switch करते हैं, आप क्या करते हो? Social context को navigate कर पाते हो. For example, when I'm teaching and I'm speaking in Hindi, but then I have a student who does not understand Hindi. Let's say we have a student from South India or a student from Northeast India who do not understand Hindi. Then I'll have to make sure to speak in English alone. Okay? But if there's a student who did not understand an idea, another student who did not understand an idea in English, I might again switch to Hindi. Okay? So basically, आपका code switching आपको enable कर रहा है to navigate social context and identities. So R true है बच्चे, A आपका incorrect हो जाएगा. Option number last is your correct answer. ठीक है. Which of the following best defines morphology in linguistic studies? Remember हमने काफी सारे levels of study of language discuss किए थे in class. So उसमें हमारे पास phonetics था,
लिंग्विस्टिक्स में यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज में भी काफी सारे लेवल्स आते हैं. फोनेटिक्स स्टडी ऑफ साउंड ऑन द टंग. फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड इन योर माइंड. ठीक है. देन कम्स मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द वर्ड. जो एक वर्ड है उसकी फॉर्म को स्टडी करना. वर्ड कैसे बना. सक्सेस में अन लगा दिया अनसक्सेस, FUL लगा दिया फुल अनसक्सेसफुल. केयर में केयर लेस लगा दिया केयरलेस, नेस लगा दिया केयरलेसनेस. राइट. वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज मोर्फोलॉजी की, उसकी स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं. फोनेटिक्स मोर्फोलॉजी, फोनेटिक्स फोनोलॉजी मोर्फोलॉजी. फिर आता है सिंटेक्स, स्टडी ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, दैट्स सिंटेक्स. देन यू हैव सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग, लिटरल मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग का स्टडी सिमेंटिक्स. And study of meaning in a context, contextual meaning का study is called pragmatics. These are your levels of study of language. So by that logic, study of internal structure and formation of words, morphology ये हो जाएगा. Okay, next question for you people is, which of the following statements about direct method of language teaching is correct? Now this is direct method. Okay, I am assuming this is your last question. इसके बाद आपके पास शायद passages questions ही हैं. तो let me check. चलो इतने आंसर करो. ठीक है. इसके बाद बच्चे आपके पास पैसेजेस के आंसर क्वेश्चन ही हैं. नहीं, अभी एक दो क्वेश्चंस और हैं. एक दो क्वेश्चंस आई माइट बी लाइंग. एक दो क्वेश्चन से तो ज्यादा ही है. चलो कोई बात नहीं, विल आंसर देम नॉनदलेस. क्या ही करना है और, है ना. अकेले बैठोगे तो एंग्शियस हो जाओगे. कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो इससे अच्छा तो क्लास ही ठीक है. Yeah, so which of these statements about direct method of language teaching is correct? And the answer is, since most of you say the answer should be B, it is indeed B. Direct teaching में क्या होगा? It relies heavily on grammar translation exercise. No. It emphasizes communicative aspects of language. Yes. It excludes the use of learners' native language in the classroom. Yes. ठीक है? That's your correct answer. तो आप अपनी first language का use नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, right? Next question, in sociolinguistics, what is a register? Register, jargon, creole, pidgin, favorite topics of NTA. Repeatedly questions आते हैं इस पे. So what is a register? Medical register, legal register, those words or those language words, that vocabulary which is specific to a specific social setting is called a register. ठीक है? Is called a register. A variety of language used in particular social settings for a particular purpose. Formal register होता है, legal register, casual, etc. etc. Okay. The Worthian hypothesis, basically Sapir-Whorf hypothesis is the Worthian hypothesis or the linguistic relativity theory जिसको हम बोलते हैं, is associated with Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf. What does it propose? Remember हमने बहुत सारी theories of language acquisition cover की थी क्लास में. So this is one of those theories. The Sapir-Whorf hypothesis. The Sapir-Whorf hypothesis. इसका एक और नाम क्या है? The theory of linguistic relativity. Theory of linguistic relativity. इसमें भी दो variations आती हैं. There's a strong one, there's a weak one. ठीक है. Strong one क्या कहता है कि language completely क्या करती है? Determine करती है thought को. लेकिन जो weak वाला है वो कहता है that language influence करती है human thought को. Human thought कैसे construct होता है उसको determine या influence करने में language has a major role to play. So structure of language influences or shapes its speakers' perceptions and categorization of the reality. That's your correct answer. Yes. Language shapes perception. Simple as that. Correct. You need to match linguists with their primary contributions. J.L. Austin, Noam Chomsky, Del Hymes, and Michael Halliday. Communicative competence, systemic functional linguistics, speech act theory, and generative transformational grammar. Next question. Also from language unit. ये भी language unit का question है. I am assuming हमने ना 100 plus questions कर लिया आज की क्लास में. ठीक है? Because I remember I made a set of 100 questions. फिर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे, तो टेक्निकली आपके क्वेश्चंस 100 प्लस हो गए हैं, बट नो वरीज. जेएल ऑस्टिन का तो देखो स्पीच एक्ट थ्योरी है, ऑस्टिन ने दी थी एंड देन बाद में सर्ल ने उसको कंसेप्चुलाइज कर थोड़ा इलैबोरेट कर दिया था. तो ए को मैच कर दो 3 के साथ, चॉम्स्की को मैच कर दो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के साथ, तो
तो ए को 3 से मैच किया, बी को 4 से मैच किया, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया। डेल हाइम्स को मैच करना है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के साथ, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नहीं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका आइडिया था? चॉम्स्की का। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हाइम्स का आइडिया है, माइकल हैलिडे का आइडिया आ जाएगा सिस्टमिक फंक्शन लिंग्विस्टिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज easy question and it's a chronology question. ऑगस्टन, रोमांटिक, एलिजाबेथन, विक्टोरियन एजेस को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, एंड ये तो सबसे पहले आ जाएगी 16th सेंचुरी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की टाइम पीरियड क्या है? 1558 to 1603। चलो 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 जल्दी जल्दी, we'll wind up because they're creating a mess now. Yeah, yeah. The answer is 3124 is the correct answer. Please read that quickly and then you need to answer questions. क्या ये visible है? I hope the text is not too small, बच्चे। Visible है ना? I mean, I just wanted to fit the question with the passage itself. So in doing so, I might have just reduced the font size a little too much. So I hope the passage is visible. Is it visible? Yeah, visible है ना? ठीक है। देखो, अल्टीमेटली अगर आपको एग्जैक्ट ईयर्स पता है एजेस के, वेल एंड गुड। नहीं भी पता है तो क्रोनोलॉजी तो आपको रफली पता है ना। तो सबसे पहले एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603, 1603 से लेकर 1625 तक जैकोबियन एज, 1625 टू 1642 आपकी चार्ल्स द फर्स्ट की एज है, 42 में। उसके बाद फिर इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, 49 में चार्ल्स सेकंड फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। देन 49 टू 60 क्या रहेगा? इंग्लिश इंटररेग्नम रहेगा। 1660 में रेस्टोरेशन हो जाएगा। उसके बाद 18th सेंचुरी एंटर करते हैं तो आपकी ऑगस्टिन एज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रोमांटिक एज 1798 टू 1837, 1837 में क्वीन विक्टोरिया क्वीन बन जाएंगे, 1901 तक वो कंटिन्यू होगा। तो अल्टीमेटली बच्चे टाइमलाइन रफ भी पता है तो ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, स्मॉल बट विजिबल। चलो फिर रीड कर दो फटाफट से, क्विकली क्विकली। दिस इज स्मॉल बट विजिबल, राइट? तो फटाफट से इसको रीड कर दो एंड लेट मी जस्ट सी फॉर माई सेल्फ। मैं देख लेती हूँ अपनी स्क्रीन पर। हाँ, इट्स वेरी मच विजिबल, विजिबल तो है ही। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं एक बार। लेट्स रीड दिस टुगेदर। तो स्टेटमेंट क्या है, पैसेज क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिड नॉट एमर्ज फुली फॉर्म्ड। जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बार भी एमर्ज नहीं हुई थी। इट अक्यूमुलेटेड थ्रू सक्सेसिव स्कूल्स ऑफ थॉट। ऑब्वियसली बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आए, धीरे धीरे मिलकर पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म बना। each reacting against the previous one, each reacting against the predecessors perceived inadequacies। बिल्कुल जैसे न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिशिएंसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास एक नया थ्योरी आई, फिर एक दूसरी थ्योरी आई। The earliest systemic English criticism concerned chiefly with literature's moral and didactic function। पहले हम लिटरेचर को कैसे बच्चे वो वे किया करते थे, वैल्यू किया करते थे बाय फाइंडिंग आउट कि उसका मॉरल फंक्शन क्या है। आस्किंग नॉट हाउ अ टेक्स्ट अचीव्ड द इफेक्ट बट हाउ दोज इफेक्ट्स वर सैल्यूटरी। ठीक है, वो हमें हेल्प कैसे करते हैं, बेनिफिशियल कैसे हैं। बाय द अर्ली 20th century हम क्या करते हैं, अ जनरेशन ऑफ क्रिटिक्स केम अप हु ग्रो इम्पेशेंट विद द आइडिया कि हम सारा का सारा लिटरेचर को मॉरल ग्राउंड पे वे कर रहे हैं। सो दे स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म, both insisting that a poem's meaning was inseparable from its perceived verbal texture। मतलब form and text, form and content cannot be separated। The formalist consensus did not hold indefinitely। Obviously formalism हमेशा popular तो नहीं रहने वाला था। It was soon replaced by structuralism। Structuralism ने फिर structure पर focus किया, which was again soon replaced by post-structuralism, which led the claim that author was less the source of meaning than a retrospect construction lending false unity to unstable view of citations। उसके बाद बचे materialists आएंगे जिसमें आपके marxists आएंगे, and materialist and historicist critics insisted no reading could be innocent of history।
आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हटाकर remove कर you cannot study history. Arguing texts were implicated in ideological struggles over class, gender, race, empire. क्लास से आपके पास मार्क्सिज्म आ जाएगा, जेंडर से फेमिनिज्म एंड क्वियर आ जाएगा, रेस से आपकी क्रिटिकल रेस थ्योरी आ जाएगी, एम्पायर से आपकी पोस्ट कॉलोनियल थियरी आ जाएगी. मेकिंग क्रिटिसिज्म टास्क इनएस्केपेबली पॉलिटिकल, है ना. तो धीरे धीरे क्रिटिसिज्म बिकेम वेरी पॉलिटिकल. बाय द सेंचुरीज क्लोज, मतलब बाय द एंड ऑफ 20th century, the result was not a single method. हमारे पास एक मेथड नहीं था for literary analysis. Rather, we had contested fields of incompatible approaches united only by their rejection of the disciplines of original idea of moralizing certainties. अब करना है आपको first question answer, which is exactly. According to the passage, the earliest systemic English literary criticism was primarily concerned with the moral and didactic effects of literature. Chalo, next question. Practical criticism and new criticism as described in the passage arose primarily as a reaction to what? New criticism and practical criticism arose as a reaction to what? Okay, next question. चलो 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 quickly. Last 5 questions हैं, last 4th question है ये. Practical and new criticism arose as a reaction to the externalist emphasis on biography, history and moral judgment. Option number B. The passage suggests that post-structuralist questioning of authorial intention was philosophically grounded in which of these? When post-structuralists began to question certain established ideas, for example, the fixity of meaning, the finality of meaning, so what was the ground on which they started doing it? A renewed interest in biological criticism, an emphasis on close formalist textual analysis, the idea that meaning is generated relationally by a linguistic system rather than fixed by individual, a return to moral and didactic criticism. No, 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 yes. Okay, so option number C, evidently, quite evidently, is the correct answer. Yeah. Next question. Okay. Materialist and historicist critics, according to the passage, differed from formalist critics. How? Materialist and historicists. मटीरियलिस्ट कौन हो जाएंगे बच्चे? जो मटीरियल एस्पेक्ट की स्टडी करें, मतलब सोसाइटी में क्लास की स्टडी करें. हिस्टोरिसिस्ट क्या है? हु आल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वे हिस्ट्री हैज बीन रिटन. तो आपका जितना भी न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल मटीरियलिज्म, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाली थ्योरीज है ना, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, जेंडर, क्वियर, ये सब आपकी मटीरियलिस्ट एंड हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म में आती हैं. So they differed from formalists. How? And in what terms? In what terms? They differed from formalists in what terms? Obviously, formalists were very fixated on the text itself, है ना? Literary texts are inevitably implicated in historical and ideological structures. That's your correct answer. चलो, I'm assuming ये last question है of the mock test also and of this passage also. Which of the following best characterizes the overall historical narrative that the passage constructs about literary criticism? Okay, literary criticism की timeline के बारे में, उसकी growth and development के बारे में, which of these is the best suited line to describe the entire passage? The entire passage. A succession of schools, each largely reacting against the limitations of the previous one. Correct लग रहा है? बिल्कुल correct है. A single continuously refined method culminating in objective consensus. There is no consensus. There is no agreement. A static field unaffected by intellectual developments. No. The more intellectual developments we've had, the more eco-criticism and queer theory सब कुछ आया है. The more they've been accommodated into literary theory. And exclusively biographical and historical enterprise also no. The correct answer is option number A is your correct answer. ठीक है? Option number A is your correct. चलो. That also brings us to the end of this mock test.
and yeah, so this is your final mock test. Tomorrow you have an exam. Tomorrow ultimately जो 6 months की इतनी सारी पढ़ाई की है, इतना सारा hard work किया है, is going to be put to test, and I am for once very very positive. I have a strong feeling that you people are going to do very very well. Do not try, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. All you need to do is just relax, let your minds calm down. We've solved more than 100 questions, right? We have solved more than 100 questions, more than 100 I'll tell you. And I'm going to send this PDF as always in the Telegram channel. Do remember, आपका जो Unacademy का अश्योर ऑफर है वो अभी लाइव है. इसके बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं ओनली टिल 27 जून. द सूनर यू अवेल द बेनिफिट्स द बेटर. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाए और आपको लगता है कि आप जून में JRF क्लियर कर लेंगे, सो मेक श्योर करना नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ पर सेंड करेंगे, ऑन द ईमेल ID help@unacademy.com. आपको यहाँ पर शेयर करना है, तभी जाकर अब अपना जो रिफंड है 100% वो क्लेम कर पाएंगे. If you are preparing for the December 2026 cycle and if you are preparing for the June 2027 cycle, in both these cases आपके पास अभी भी मौका है. If you enroll in the UGC net courses of Unacademy और अगर आप JRF क्लियर कर लेते हो तो आपकी 100% फी क्या होगी, रिफंड हो जाएगी. अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो क्या होगा, आपको 6 months का कोर्स एक्सटेंशन मिल जाएगा. इमेजिन आपने दिसंबर 2026 तक का कोर्स लिया, ठीक है, और दिसंबर 2026 में आपने JRF क्लियर कर लिया, तो आपकी 100% मनी आपको वापस मिल जाएगी. अगर आपने क्लियर नहीं किया, समहाउ अगर आप नहीं कर पाए, सो व्हाट डू यू डू, कोई लॉस होगा, नहीं होगा. आपको 6 months का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है. दिस इज द UGC नेट अश्योर ऑफर. डन. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. I'll remind you once again, your examination is going to be of 3 hours only. You've been studying for 6 months or probably more than that. So you people are very well prepared. Do not worry. No anxieties, no more fears, no more exam blues. We're going to relax. We're going to meet sham ko 7 p.m. and we will just discuss some exam strategies. कुछ tips and tricks मैं आपको बताऊंगी. No more studies. कुछ नया topic study करने की जरूरत अब नहीं है. राइट. आपका जो ये क्लास चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शाम की 7 PM क्लास का लिंक होगा फ्री लाइव क्लास के अंदर. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आपके लिए कहाँ गई क्लास, या दिस इज योर टिप्स एंड ट्रिक्स क्लास 7 PM. I'm gonna meet you people for one last message before the exam. Thank you so much for joining and good luck to you.